प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नीताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। আমি গাইব? আচ্ছা দেখুন দেখুন ঠিক আছে ঠিক আছে। Hare Krishna. So welcome all of you for the, which day it is? Fourth day of Sravan Utsav. So it is very blissful, right? You are enjoying? Okay. কতজন বাঙালি ভক্তরা আছে এখানে? ওকে, উলুধ্বনি তো আপনারা চেনেন। ওকে, ওকে Okay. Hare Krishna. So I'll give a small introduction of Mahatma Prabhu. Mahatma Prabhu was born in Los Angeles, California in 1950. In 1969, at the age of 19, he first met Srila Prabhupada through the Bhagavad Gita as it is. And then later that year met Srila Prabhupada personally in Los Angeles in January of 1970. He moved into the temple in Berkeley, California, and shortly after received first and second initiation. He went on to do a variety of services including book distribution, Sankirtan leader, temple president, college preaching, congregational development, and various educational projects. This has culminated in the work he does today, developing workshops, social media, online courses, and books both for devotees as well as the general public through his company Sattva, www.thesattwaway.com. He practically shows the many ways that Krishna consciousness offers solutions to today's challenges and rights, and teaches in a way that resonates with devotees and people in general by helping them see life as a spiritual practice. Mahatma Prabhu is well known in ISKCON for his recorded and live music. Most notable is recording of Brahma Samhita, but also for his workshop on such essential topics as Japa, forgiveness, humility, vows, and marriage. And self-care. And I also wanted to say, he said, I moved in the temple in Berkeley, and what happened right after that is I got a free haircut. I think that's enough. You don't have to say anymore. He is now based in Alachua, Florida. He lives with his wife Janava and daughter Shama Mandali and travels around the world part of the year. If you are interested in having him come to your center or would like to help him in his service, you can contact him at mahat@aol.com. तो महात्मा प्रभु I say, he says. Yeah. You say, you stop, I say. महात्मा प्रभु भगवत गीता से पहले उनसे मिले हैं, उसके बाद 1950 में, और जब वो
1950 में उनका जन्म हुआ है। 1969 साल में जब वो 19 साल थे, प्रभुपाद का गीता उनके हाथ में आया है और 1 साल के बाद में प्रभुपाद से मिले और कैलिफोर्निया बर्कली मंदिर में ज्वाइन कर लिए हैं। और अलग अलग सेवा, संकीर्तन लीडर थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और टेम्पल प्रेसिडेंट भी थे, कॉलेज प्रीचिंग कर रहे थे और गृहस्थों का से प्रचार भी कर रहे थे और स्कूल्स कॉलेजों सब में भी वो प्रचार कर रहे थे। इनके महात्मा प्रभु के जो फेमस म्यूज़िक हैं, ब्रह्म संहिता का म्यूज़िक किए हैं और बहुत अच्छे से सेमिनार्स करते हैं। और उनके पत्नी और एक लड़की के साथ में वो अलाचुआ फ्लोरिडा में रहते हैं और सारा विश्व में घूमते हुए प्रचार करते रहते हैं। जो लोग उनको चाहते हैं उनके मंदिर में बुला सकते हैं। हरे कृष्ण। ये है महात्मा प्रभु का इंट्रोडक्शन। आज श्रवण उत्सव का 4था दिन है और आज का थीम है Krishna says, क्या है? Krishna says, This will keep us packed together. Theme. Krishna says, you should not be attracted or adverse to anything, but I'm adverse to my biography. So you can finish, okay? We can start, all right? Okay, Prabhuji. Thank you. Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Giribhardhari Gopi Janavallabha Giribhardhari Shodhanandana Braja Jana Ranjana Shodhanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Chira Vanachari Jamana Tira Banachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Giribhardhari Jagopi Janavallabha Giribhardhari Shodhanandana Braja Jana Ranjana Yashodhanandana Braja Jana Ranjana Jamana Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Shri Radha Madhava ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamne. Can you take that? Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Dastarine. Srila Prabhupada ki jai. Mukam karoti vachalam pangolangayate girim yakrapahatamaham vande Siguru dinatarinam. Panchakalpatarubhyascha kripashandubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanandasya Advaita Godadhar Shivashari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Bhaktivinoda Thakur says, when I'm chanting the holy name, I feel like I'm drowning in an ocean of nectar. हरि हरि। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जब मैं हरि नाम का जप करता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अमृत के सिंधु में तैर रहा हूँ। You feel like that when you chant Japa? आप लोगों को ऐसा महसूस होता है जब आप नाम जप करते हैं? Not yet. Maybe by the end of the class. तो शायद अब तक नहीं, लेकिन क्लास के ख़त्म होने तक आपको ऐसा महसूस होगा। Well, the title of this class was something like getting a taste? Getting a taste. How to get a taste for chanting. Holy name, O tongue, taste the sweetness of the holy name. Holy name, O tongue, taste the sweetness of the holy name. तो इस कथा का शीर्षक था कि भगवान का नाम, हे मेरे जीवा, भगवान के इस दिव्य नाम का आनंद प्राप्त करें, मिठास को चखें। Do you have a what's its face? You put over the microphone. The cover, because the wind is blowing into it. You have? Windscreen. You have a windscreen? No. So I was in, I heard a lecture of Prabhupada. तो मैंने प्रभुपाद जी का एक प्रवचन सुना। He said, imagine उन्होंने कहा कि विचार करो, you have some tape on your tongue. Like, आपके जीवा के ऊपर कोई टेप लगा है। when he said that, I thought of masking tape. तो प्रभुपाद जी ने जब ऐसा कहा तो मुझे लगा कि वो जो मास्किंग टेप आता है ऐसा। So you put some masking tape on your tongue. तो अपने जीवा पे वो मास्किंग टेप लगाइए। And then you eat some gulab jamun. और फिर उसके बाद गुलाब जामुन खाइए। And what does it taste like? तो उसका स्वाद कैसा लगेगा? Tastes like masking tape. तो उसका स्वाद मास्किंग टेप की तरह आएगा। Right? सही है? Yes? Yeah. So Prabhupada gave that example that for a conditioned soul chanting the holy name. प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से इस संसार में संक्रमित जीवात्माएं हैं, उनको हर भगवान का नाम का स्वाद ऐसा ही आता है। It's like a person eating with tape on their tongue. वैसा ही जैसा कि जीवा के ऊपर टेप लगा के खा रहा हो। So sometimes what that would mean you're tasting your own contaminated consciousness. तो कई बार ऐसा इसका मतलब हो सकता है कि हम खुद अपनी जो दुष्प्रभावित चेतना है उसका स्वाद ले रहे हैं। So we know this, we have experience of this. तो हम जानते हैं, हम सब ने इसका अनुभव किया है। And I had another experience, much different from this. और मेरा एक दूसरा भी अनुभव है, इससे बिल्कुल अलग। One time I was at a Japa retreat. एक बार मैं एक ऐसे जपा रिट्रीट कार्यक्रम में था। Thank you. And I was at a Japa retreat and the devotee was, everybody was facilitated to be able to chant better.
तो मैं एक जपा रिट्रीट कार्यक्रम में था और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी कि हर कोई भगवान के नामों का जप अच्छे प्रकार से कर सके. And this devotee said, this mantra we're chanting at the Japa retreat seems to be a very different mantra than the mantra I chant every day at home. तो उन भक्त का ऐसा अनुभव था कि ये जपा रिट्रीट कार्यक्रम में जो भगवान के नामों का जप कर रहे थे तो उनको ऐसा अनुभव हो रहा था कि ये तो बिल्कुल ही अलग है जैसा मैं घर पे नाम जप करता हूँ. Like, did somebody put something in this mantra, some drug? ऐसा जैसे कि इस नाम में किसी ने कुछ मिला दिया, कोई ड्रग इत्यादि. Sachinandan Swami tells a story, a similar story. सच्चिदानंद स्वामी महाराज एक इसी प्रकार का अनुभव बताते हैं. And this was an experience he had that became the impetus for him to try to help devotees go more deeply in their chanting. तो ये उनका जो अनुभव था उनको प्रेरणा दिया कि किस प्रकार से वो भक्तों को प्रभावित कर सके भगवान के नामों के जप में और गंभीरता से नाम लेने के लिए. So he decided that he wanted to go to Govardhan and just spend the whole day with the holy name and see if he could go more deeply, uncover what the Shastra says is in the holy name that we don't always uncover. तो एक बारी उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि वो गोवर्धन में जाएंगे और पूरे दिन भगवान के नामों का जप करेंगे और भगवान के नामों में और गंभीरता पूर्वक अंदर घुसने का प्रयास करेंगे जो कि साधारण तौर पर नहीं हो पाता. You know, like you read in the Shastra, it says, the holy name is the sweetest nectar, my highest treasure, the most valuable thing Krishna has. And then you chant, and like, well, that doesn't seem to be what the Shastra says. तो महाराज उसी प्रकार का अनुभव लेना चाहते थे जैसा कि शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान का नाम जो है वो सबसे उत्कृष्ट अमृत है और ये सबसे उत्कृष्ट जीवन का जो पराकाष्ठा है जहाँ तक हमें पहुँचना है. इस प्रकार की जो चीज़ें शास्त्रों में लिखी हैं हरिनाम के बारे में उसका अनुभव करना चाहते थे. Do you ever have that experience? आप लोगों का ऐसा अनुभव है? Is this the same holy name I'm chanting? The Shastra describes it differently than I experience it. Maybe it's a different holy name. क्या ये वही हरि नाम है जिसका जप हम लोग करते हैं या फिर वो कुछ अलग है जिसके माध्यम से शास्त्रों में जो लिखी बातें हैं जो प्राप्त होती है नाम जप करने से. And then Mahaprabhu chants the holy name and he exhibits Mahabhav. और महाप्रभु जब हरि नाम जप करते हैं तो वो महाभाव प्रस्तुत करते हैं. And his guru said, we've never seen anyone exhibit Mahabhav. We've only read about it in the books and now we're seeing it. उनके गुरु ने कहा कि हमने कभी देखा नहीं है कि कोई महाभाव प्रकट कर रहा हो, हमने खाली शास्त्रों में पढ़ा है ऐसा. So Sachinandan Swami tells that, you know, we read in the books, this is what the holy name is, but it's not my experience. Let me see if I can go more deeply. I'll just chant all day by Govardhan and maybe something will happen. तो सच्चिदानंद स्वामी महाराज कह रहे थे कि मैं पूरे दिन प्रयास करूंगा गोवर्धन के पास जप करने का और प्रयास करूंगा ये अनुभव करने का जो कि शास्त्रों में अनुमोदित है. So day after day he's chanting all day. तो कई दिन लगातार वो पूरे दिन तक जप करते रहे. Well, I would say all morning, all day and all evening. तो मैं कहूँगा सुबह, दोपहर और शाम Many rounds. कई माला जप करते थे. Yeah. And then he tells that he had a breakthrough. फिर वो बताते हैं कि उनको एक विशेष अनुभव हुआ And some realization came and some taste came. और उनको एक साक्षात्कार हुआ और हरिनाम में रुचि जागृत हुई. And it was an experience that he had never had before. और उनको एक ऐसा अनुभव हुआ जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था. And he started to question. और वो प्रश्न करने लगे. This experience Let's see. Is that any better? Stop the wind? Oh, good. अच्छा होगा, इससे हवा रुकेगी शायद. Not there. No.
So, no, you actually need a mic screen. It comes in the front. That's where it comes in. Not the side. Sides don't pick up the sound. It comes in the front. Anyway, we'll tolerate it. So, he had some experience with the holy name that was unique to him. हरि हरि उनको हरि नाम करने के बाद कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो कि विचित्र था, सबसे अलग था. And it was so different from the way he normally chanted. और वो इतना अलग था जो साधारणतः जप करते थे उससे. In other words, the experience was so different. वो जो अनुभव था वो बिल्कुल अलग था. He asked himself a question. तो उन्होंने अपने आप से प्रश्न पूछा, I wonder if I've ever actually chanted the holy name before today. तो मैं सोच रहा हूँ कि आज से पहले मैंने कभी हरिनाम जप किया था क्या? Because this holy name I'm chanting is much different than the holy name I've been chanting, and I wonder if I've even was chanting the holy name. क्योंकि ये नाम जप जो मैं अभी कर रहा हूँ ये तो बिल्कुल अलग है जो कि मैं पहले नाम जप किया करता था उससे. Did you ever feel like that when you're chanting? That there's something more to the holy name, but somehow or other you're not getting it? Do you ever feel like that? क्या आप सबको ऐसा महसूस होता है कि आप जो हरिनाम जप कर रहे हो, हरिनाम में वास्तविकता में उससे कुछ और भी है, कुछ अलग भी है? So, if you're a young devotee, you'll think, okay, in a couple of years. But if you've been over 50 years, you start to wonder, like, is this ever going to happen? Right? तो हो सकता है आप युवा भक्त हो, आपको लगे कि ठीक है अभी तो समय है, लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है तो आपको तो एक अलग सा ही विचार आएगा मन में. Well, I can say it can happen at any time. It can. तो मैं कह सकता हूँ कि कभी भी हो सकता है, ऐसा संभव है. Yeah. You remember that song Bhaktivinoda Thakur said, the song Radha Krishna Bol Bol? You know that song? आप सब जानते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक भजन लिखा है राधा कृष्ण बोल बोल. What's the verse where he says, please taste the nectar of the name at least once? Ekanam bolore. You know that? What's that verse? You know it? तो उसमें एक No. Radha Krishna Bol Bol. There's a verse. Ek bar nam rasa. Ek bar nam rasa. You know, taste. One time, taste the nectar. Just one time. And fill the soul of Bhaktivinoda Thakur. तो इस भजन में भक्तिविनोद ठाकुर जी ऐसा लिखते हैं कि एक बार भगवान का नाम लें और No. That's maybe another song. Anyway, you understand, he's like blessing us or asking us, please, once taste the nectar of the holy name. तो आप सब जानते हैं, आप सब समझ रहे हैं, उसमें वो भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि एक बार हम वो नाम जप करें और वो अनुभव करें. So my understanding of this verse, or one way to understand it, is that तो मेरा जो समझ है इसके प्रति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. my understanding is that Bhaktivinoda Thakur wants us, he wants to give the nectar to us. He wants us to experience the nectar. तो मेरा ऐसा समझ है कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी चाहते हैं कि हम उस अमृत का अनुभव करें. Srila Prabhupada told Mula Prakriti Dasi, श्रील प्रभुपाद जी ने he asked Mula Prakriti Dasi, can you see Krishna? तो उन्होंने मूल प्रकृति माता जी से पूछा कि क्या तुम कृष्ण को देख पाती हो? She said, no, Prabhupada. तो उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद, But I want to. पर मैं चाहती हूँ. Prabhupada said, I want to show you Krishna. प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आपको कृष्ण को दिखाना चाहता हूँ.
हरि right? हरि Krishna Govinda Hari. It's worse? Worse. The cure is worse. Krishna Govinda. Yeah. So, so sometimes we're chanting, we think, oh, it's difficult. I'm not getting the proper taste. तो कई बार हम जप करते हैं और हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है कि मुझे तो इसमें स्वाद नहीं आ रहा, But it's nice to think that Bhaktivinoda Thakur wants to give you the taste. पर ये बहुत अच्छा है, ये सोच के हमें अच्छा लगेगा कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी हमें वो स्वाद देना चाहते हैं। Prabhupada wants to give you the taste. श्रील प्रभुपाद जी आपको वो रस देना चाहते हैं। And so we're here today to discuss how that may be possible. तो आज हम सब चर्चा करेंगे कि ये कैसे संभव है। I wanted to read something really beautiful. मैं कुछ पढ़ता हूँ, बहुत ही सुंदर है ये। This God brother and I were having a discussion तो मेरे गुरु भाई और मैं हम एक चर्चा कर रहे थे whether we can say Ram or Rama. तो हम ये संवाद कर रहे थे कि क्या हम राम बोलें या रामा बोलें। Did you ever wonder? क्या आपने कभी सोचा है? And people say, it sounds like Prabhupada's chanting Hare Ram, 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 Hare Hare. तो लोग कहते हैं प्रभुपाद जी ऐसे जप करते थे, But Shastra says it's 32 syllables. पर शास्त्र बताते हैं कि उसमें 32 सिलेबल हैं, 32 अक्षर हैं। And Jiva Goswami says we should be chanting 32 syllables. तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि हमें 32 मात्राओं का जप करना चाहिए। But, लेकिन you know in Vrindavan there's a temple. It's called the Krishna Balaram, not the Krishna Balarama temple. You know that temple? तो आप सब ने मंदिर का नाम सुना है, कृष्ण बलराम मंदिर, उसको कृष्ण बलरामा मंदिर नहीं बोलते। Anyway, you know, devotees, they like controversy, you know, because they don't go to the movies and they don't go to do sports, so they have to do something exciting. So, you know, let's debate Rama or Rama, you know, pull in the Shastra. But something good came out of it. I want to read to you. तो कई बार भक्तों को अच्छा लगता है विरोधास्पद चीज़ों के बारे में चर्चा करना कि राम है, रामा है, जैसे फिल्मों में होता है ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ This is from the Chaitanya Bhagavad. तो ये चैतन्य भागवत से है। Adikanda 11:108. आदिखंड 11वां अध्याय 108वां प्यार। At the time of offering obeisances to Lord Vishnu, विष्णु जी को प्रणाम अर्पित करते समय a foolish person chants Vishnaya Namaha. एक बेवकूफ व्यक्ति है जप करता है विष्णाय नमः। This is improper due to faulty grammar. तो ये गलत है क्योंकि इसमें व्याकरण का गलत इस्तेमाल है। And a learned person chants Vishnave Namaha. तो एक जो ज्ञानी पुरुष है वो जप करता है विष्णवे नमः। This is the correct form. तो ये सही प्रारूप है। So it's grammatically wrong. You shouldn't say Vishnaya, you should say Vishnave. I mean, I think that's what it says. It's got, the diacritics didn't translate properly, so I think it's Vishnaya and Vishnave. One is proper, one is improper. तो इसमें जो विष्णाय नमः और विष्णवे नमः है, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो इनके पास लिखा हुआ है इसमें शायद मार्क्स गलत हैं, लेकिन इसमें से एक सही है और एक गलत है। But both people, the ones who chant properly and improperly, achieve the same result. लेकिन दोनों जो कि सही जप करना चाहते हैं और जो कि सही नहीं जप कर पाते, दोनों को अंत में लक्ष्य एक ही मिलता है। Because Lord Janardhan sees the sentiment of the living being. क्योंकि भगवान जनार्दन वो जीवात्मा के भाव को देखते हैं। In other words, he sees the degree of devotion. दूसरे शब्दों में वो उसका भक्ति का स्तर देखते हैं। Or in other words, he awards the result accordingly. और दूसरे शब्दों में कहें तो वो उसी के अनुसार उनको कृपा प्रदान करते हैं। So this indicates
that when we're chanting the Maha Mantra, the essence, the most important thing is the devotion of the chanter. तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब हम नाम जप करते हैं तो उसका मूल ये है कि हम The devotion. Most important thing is the devotion of the chanter. हम कितना भक्ति कितना भाव से भगवान के नामों का जप करते हैं, Not how he pronounces it. ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस प्रकार से उसका उच्चारण करते हैं. For example, उदाहरण के तौर पर let's say I made a bhoga offering to the deity. तो कहने के लिए हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं. And you ask me, how did the bhoga offering go? और आप मुझसे पूछते हैं कि अच्छा भगवान को भोग अर्पण कैसे हुआ, कैसा हुआ. And I said, it went perfectly. और मैं आपको बोलूं कि एकदम पूर्ण रूप से बहुत अच्छा हुआ. I rang the bell perfectly. मैंने घंटी बहुत अच्छे से बजाई. I did achman perfectly. मैंने आचमन भी खूब अच्छे से किया. I had a kusa mat. मेरे पास एक कुसा का जो चटाई था. And I chanted the mantra perfectly. और मैंने पूर्णता से नाम जो मंत्र थे उनका जप किया. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane. Perfect. सब कुछ एकदम खूब सुंदर पूर्ण रूप से. And then I ask, or who's asking? Am I asking? Anyway, I forgot what I was at. Then I ask, फिर मैं पूछता हूँ what about devotion? भक्ति का क्या? Did you offer with devotion? क्या आपने भक्ति भाव से अर्पित किया He भोग? said, I wasn't thinking about devotion. I was thinking about perfectly chanting the mantra. ओ, मैं तो भक्ति के बारे में भाव के बारे में सोच ही नहीं रहा था. मैं तो कैसे पूर्ण रूप से अच्छा उच्चारण हो इसके बारे में सोच रहा था. Have you ever chanted the Maha Mantra without devotion? क्या आपने कभी बिना भक्ति के बिना भाव के नाम जप किया है? Raise your hand. अपना हाथ ऊपर We करें. should get 100% hands up. तो 100% लोग हाथ खड़ा I'm going करें. to say something heavy. मैं कुछ बहुत भारी भरकम बोलने वाला हूँ. And you might think after I say this, I'm bogus. तो मेरे ऐसे कहने के बाद आपको लगेगा कि मैं जो, But I will give a disclaimer. तो पर मैं आपको बताता हूँ. Sometimes when you want to impress the audience with a point, you have to, I don't want to say exaggerate, but you have to push the point very strongly. तो कई बार आपको किसी बिंदु के ऊपर थोड़ा जोर देना होता है तो उसको थोड़ा अलग करके और उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रहार करना पड़ता है. Okay, I'm not going to say it yet. Hold on. तो अभी Suspense. अभी थोड़ा रुक के थोड़ा बताऊंगा आपको. Have you ever chanted your rounds with the sole intention of getting them done? No other reason, no other purpose. Just get them done. Raise your hand. आपने नाम जप किया है बस इस उद्देश्य से कि नाम जप खत्म करना है. If your hand's not up, you didn't understand the question. अगर आपका हाथ नहीं उठा इसका मतलब आपको प्रश्न ही नहीं समझ आया. It's exactly like making a bhoga offering with no devotion and just, I did it perfect. तो ये उसी प्रकार से है कि हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं बिना भक्ति के बिना भाव के. हमने खूब अच्छे प्रकार से अर्पित तो किया. How was the arti, Prabhu? It was perfect. कोई पूछे कि प्रभु आरती कैसी रही? तो बहुत अच्छा You था. should have seen it. You should have seen me. तो आपको देखना चाहिए था कितना अच्छा था. I was so good. मैं कितना बढ़िया तरीके से कर रहा था. I'm so good. I'm so artistic the way I do it. मैंने बहुत अच्छे से किया एकदम खूब सुंदर प्रकार से. What about the devotion? पर वो भक्ति का क्या? Oh, I didn't think about that. उसके बारे में तो मैंने सोचा ही I नहीं. was too busy showing off. मैं तो बहुत व्यस्त था दिखाने में दिखावे में. So when we apply it to offering bhoga or offering artik, we immediately understand, oh, that's wrong. तो जैसे ही हम Right? इसको भोग अर्पित Isn't it? करने में या आरती में इसके बारे में सोचते हैं तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि ये गलत है. It's so obvious. ये तो बिल्कुल ही साफ प्रत्यक्ष दिखता है. The point of offering bhoga is not to chant the mantras perfectly. तो भगवान को भोग अर्पित करने के पीछे का उद्देश्य खाली ये नहीं है कि मंत्रों का उच्चारण बहुत अच्छे से हो. The point of arti is not to do everything externally perfectly. We know that. It's obvious.
तो आरती करने के पीछे का उद्देश्य ये नहीं है कि हम सब बाहरी रूप से खूब अच्छा करें, ये तो सब कुछ दिखता है। And then we chant, just to get it done. और फिर हम नाम जप करते हैं इसलिए क्योंकि हमें नाम जप करना है, बस उसको किसी प्रकार से पूरा करना है। So here's my heavy statement. तो अब मेरा भारी भरकम संदेश। All right, if I offend anybody in advance, please forgive me. तो मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूँ अगर मैं किसी के प्रति कोई अपराध हो तो। That kind of chanting is pretty much useless. तो इस प्रकार का जो नाम जप है ये किसी भी उपयोग का नहीं है। Okay, you're going to say, but Prabhu, how could you say chanting is useless? All chanting is beneficial. तो आप प्रभु जी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नाम जप अनुपयोगी है? नाम जप तो अपने आप में पूर्ण। You would say all chanting is beneficial, it can't be useless. तो आप कह सकते हैं कि नाम जप जो है उसका तो फल मिलता है, कैसे अनुपयोगी कैसे है? I will prove it to you. तो मैं आपको इसको प्रमाणित करके दिखाऊंगा। Will you allow me to prove it to you? क्या आप मुझे ऐसा मौका देंगे कि मैं इसको प्रमाणित करूं? Have you ever Okay, I'm going to prove it right now. तो मैं अभी प्रमाणित कर दूंगा। Have you ever chanted 16 really bad rounds? Raise your hand. क्या आपने कभी 16 माला बहुत ही गंदे तरीके से किया है? We have, okay. No one's an avatar. Everyone has done it. Okay. How did you feel after you chanted those rounds? तो आपको कैसा लगता है जब आप 16 माला जब अच्छे से नहीं करते, खराब तरीके से करते हैं तो? Did you feel like you chanted Hare Krishna? आपको लगता है कि आपने हरे कृष्णा जप किया? What did you feel like? कैसा महसूस होता है आपको? Disgusted. Yeah. You didn't feel like you chanted Hare Krishna. You could have chanted anything, right? तो हमें ऐसा लगता नहीं कि हमने हरे कृष्णा जप किया, कुछ भी बोल दिया बस। That's proof that we can chant and the benefit is very little if at all. तो ये इसका प्रमाण है कि हम हो सकता है नाम जप करें और उसका जो लाभ है बहुत थोड़ा सा होगा। Okay, I have a question for you. तो मेरा आप सबके लिए एक प्रश्न है। First, you agree? We've all had that experience. I don't see how we could not agree, but I just want to make sure. Do you all agree? तो क्या आप सब इस बात को मानते हैं? That you've chanted 16 rounds, and after the 16 rounds, you felt worse than before you started chanting. कि आप 16 माला जब पूर्ण करते हैं और उसके बाद आपका जो अनुभव है वो ऐसा है, उससे भी ज़्यादा खराब है जो आप नाम जप करने से पहले थे। Yeah. Does that happen to you? तो ऐसा होता है। Like I felt like frustrated, defeated. I could have done it better. तो बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है कि I was chanting Hare Krishna and thinking of everything in the universe except one thing, Krishna. तो मैं नाम जप कर रहा था और विश्व में जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में सोच रहा था, सिर्फ एक चीज छोड़ के, और वो है भगवान कृष्ण। That's like amazing, isn't it? तो ये बड़ा विस्मयकारी है, बड़ा विचित्र है। So here's my request to all of you. तो अब मेरा आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना है। Number one, पहला, none of us can afford to chant bad rounds. तो हम में से कोई भी खराब माला जप करने के लिए नहीं कर सकता। It's like if you're very sick, you cannot afford to not take your medicine, not follow your diet, not drink your teas and water, and not exercise. Because if you don't do all of that, you're going to remain very sick. तो ये ऐसे ही है जैसे कि आप बीमार हैं और बीमार होने के बावजूद भी दवाई नहीं ले रहे हैं, अपना खाना सही समय से नहीं ले रहे हैं, कसरत नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप बीमार हैं और ये सब चीजें ना करें। You agree? क्या आप मानते हैं? Like it's really bad. If we go any day with not chanting well, it's really bad. We cannot afford to do that. तो ये बहुत अच्छा नहीं है कि हम किसी भी दिन भगवान के नामों का बिना अच्छे प्रकार से जप किए अगर उसको व्यतीत करते हैं तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। So how are we going to deal with this? तो हम कैसे इससे निपटेंगे? We have to think. हमें सोचना पड़ेगा। Or we should try to think. और हमें सोचना चाहिए। I have to take care of my spiritual life. मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन का ध्यान रखना है। And one of the most important ways I take care of my spiritual life is with my Japa.
और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका जिससे मैं अपने आध्यात्मिक जीवन का ध्यान रखता हूँ वो है And if I'm not chanting well, I'm doing self-harm. और अगर मैं जप नहीं कर रहा ठीक से तो मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ. Because I could be benefiting myself by chanting properly, but I don't. क्योंकि मैं नाम अच्छे से नाम जप करके अपना ही फायदा कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर रहा. And instead of chanting properly, I just chant to get my rounds done. और अच्छा नाम जप करने के बजाय सिर्फ मैं नाम पूरा करने के लिए जप कर रहा हूँ. Yes? That's very bad. तो ये अच्छा नहीं है, बहुत खराब. It's a very little benefit to us. इससे हमें बहुत ही थोड़ा सा लाभ मिलेगा. You know, a lot of devotees think, well, you just chant 16 rounds and sit back and relax and everything will happen. आपको ऐसा कभी सोच सकते हैं कि आप 16 माला जप कर लिया और बस आराम से बैठा और सब कुछ ठीक होगा. Yeah, we'll go talk to the Prabhupada disciples and ask them if that works. तो आपको अगर ऐसा लगता है तो प्रभुपाद जी के शिष्यों के पास जाइए और उनसे पूछे. And they will tell you. Until I took my chanting seriously, yeah, it's not automatic that it's just everything's going to come just because you're chanting. तो वो आपको बताएंगे कि जब तक हमने ध्यान पूर्वक नाम जप नहीं किया तब तक ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि मैं नाम जप कर रहा हूँ. Okay, so now we have to discuss how to chant. तो अब हमें चर्चा करनी है कि कैसे नाम जप करें. To me, one of the most interesting things about Japa is that it's not different than anything else we do in bhakti. तो मेरे लिए नाम जप ऐसे ही है जैसे कि हम भक्ति में अलग अलग कार्यों को करते हैं. तो जैसे सारे कार्य करते हैं वैसे ही नाम जप भी करते हैं. So Prabhupada is always talking about bhakti means trying to please Krishna with your sincerity, with your devotion. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति का मतलब ये है कि गंभीरता से अपने पूरे ध्यान पूर्वक भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास. Not with some big service, like Krishna is only pleased if you do some big service. ऐसा नहीं कि खाली बड़ी बड़ी सेवाएं करने से कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं. You please Krishna by your sincerity, by your desire to please him. तो आप कृष्ण को अपने कितना ध्यान पूर्वक आप जप करते हैं, आपकी ध्यान पूर्वक जप करने की इच्छा है, उससे आप कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं. So let's reflect on how we offer bhoga to Krishna, how we're supposed to offer it, and then we'll equate that to how we should offer the holy name to Krishna. तो आइए हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए और फिर उसी को हम अपने हरिनाम में कैसे उसको उस भाव को उतार सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे. So the first thing is you bring an offering to Krishna and he doesn't need it. तो पहला है कि आप भगवान के लिए कुछ भोग लेके आए और भगवान को उसकी जरूरत नहीं है. So how do you get somebody to eat something that they don't need? तो आप कैसे किसी को वो खाने के लिए प्रेरित करेंगे जो कि उसको चाहिए ही नहीं. What do you do? आप क्या करते हैं? I brought this for you. I made it just for you. Would you please accept it? तो आप ऐसा कहते हैं कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मैंने आपके लिए बनाया है, प्लीज आप इसको ग्रहण करें. I know you don't need it. मुझे पता है कि आपको ये नहीं चाहिए. It's one banana. ये एक केला, one papaya, एक पपीता, a little dahi, थोड़ा सा दही, a couple sweets. एक मिठाई का प्याला. For you, that's nothing. आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है. But I brought it for you out of love, and I'm begging you, please accept it. लेकिन मैं बहुत ही प्यार से ये आपके लिए लेके आया हूँ और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप प्लीज आप कृपया करके इसको ग्रहण करिए. And then you say, Krishna, I don't have any bhakti. फिर आप कहते हैं कि कृष्ण मेरे हृदय में कोई भक्ति नहीं है. I'm pretty worthless. मैं किसी काम का नहीं हूँ. So my offering's worthless. I'm worthless. Everything's worthless, but I'm asking you accept it. तो मेरा ये आपको भोग करना भी किसी काम का नहीं है, मैं भी किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप कृपया करके इसको ग्रहण करिए. That's the proper way to make an offering. तो ये उत्तम तरीका है, सही तरीका है कि हम कैसे भोग अर्पित करें. I was just wondering. तो मैं बस सोच रहा था. Can you ask how many people don't understand English? Because maybe everybody understands. Maybe everyone understands. Can you ask them? Oh, online. Okay. This is how Prabhupada explained we should make an offering.
तो ये प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं कि हमें इस प्रकार से भोग अर्पित करना चाहिए। So I was thinking about this. मैं इसके बारे में सोच रहा था। And we understand this is the essence of bhakti. और हम समझते हैं कि ये भक्ति का जो मूल है। Krishna, I am nothing. कृष्ण मैं कुछ भी नहीं हूँ। I am insignificant. मैं बहुत ही तुच्छ हूँ। How can I please you? मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता My हूँ? offerings are nothing. मेरा जो भोग अर्पण करना है कुछ भी नहीं है। Everything's nothing. सब कुछ नहीं है। You're great. आप बहुत महान हैं। But I've brought this for you and I'm begging you, please accept it. फिर भी मैं ये आपके लिए लाया हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप प्लीज इसको ग्रहण Yeah, करिए। then Prabhupada tells the story of Sanatana Goswami, exactly the same. तो प्रभुपाद जी फिर सनातन गोस्वामी की कथा बताते हैं ऐसा ही बिल्कुल। Yeah, he's feeding Krishna dry chapatis and asking him to accept it. कैसे सनातन गोस्वामी सूखी चपाती खिलाते थे भगवान को, कहते थे कि आप So इसको then I ग्रहण करिए। thought, isn't this the way we're supposed to chant japa? फिर मैं सोच रहा था कि क्या ये तरीका नहीं है नाम जप करने का? To offer each holy name with love, devotion, like we offer a fruit, a leaf, flower, water, in the same way? जैसे कि हम पत्र पुष्प भगवान को प्यार से अर्पित करते हैं, वैसे ही हर नाम भगवान को प्यार से भाव से अर्पित करें। Imagine you're making an offering. सोचे कि आप भगवान को एक अर्पित कर रहे हैं भोग, And it looks something like this. और ऐसा दिखे। No, not imagine you were doing that. Imagine someone else was doing that, and what would you think? तो आप अगर ऐसा देखें कि कोई इस प्रकार से भगवान को अर्पित कर रहा है भोग, तो आप क्या सोचेंगे? You would think, Prabhu, that's not the way to make an offering. आप उसको बोलेंगे कि प्रभु ये तरीका नहीं है भगवान को भोग अर्पित करने का। Have you ever chanted like that before? क्या आपने भी कभी ऐसा जप किया है पहले? If you don't raise your hand, you didn't understand the question. अगर आपने हाथ खड़ा नहीं किया इसका मतलब प्रश्न नहीं समझे आप। Isn't that interesting? हाँ, ये बड़ा Like रुचिकर है। it's so obvious if you were making an offering like that. It's like, what are you doing? Why are you chanting like that? I'm just trying to make an offering. Don't bother me. तो ये साफ साफ दिखता है कि ये तो बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है भगवान को भोग अर्पित। So when you offer Krishna the holy name, तो जब आप भगवान को हरिनाम अर्पित करते you हैं, should offer the same way you offer boga. तो ये उसी प्रकार से अर्पित करना चाहिए जैसे आप भोग अर्पित करते हैं। Same way you offer fruit, leaf, flower, water. उसी तरीके से जैसे कि आप पत्र पुष्प फल भगवान को पानी अर्पित Do करते you हैं। know, Prabhupada once said, आप जानते हैं प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, you know, if you're not making if you come to offer something to Krishna and you're proud, Krishna will kick your offering off the altar. कि अगर आप अपने मत के साथ अगर किसी चीज को भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान लात मार देंगे उस ऑफरिंग को। What if Krishna kicked your mantra off the altar? Wow. तो कैसा होगा जब भगवान आपके मंत्र को इस प्रकार से लात मार देंगे तो। Okay, so I think this is clear. तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ साफ है। Japa is not an exercise to get done, it's an exercise of devotion, it's an offering. तो जपा एक व्यायाम नहीं है, कसरत नहीं है कि उसको कर लेना है, बस ये एक अर्पण है भगवान को जो अर्पित करते हैं। Now, there's another problem we have. तो अब एक और समस्या आती है। I don't want to depress you. मैं आपको गलत फील नहीं कराना चाहता। Actually, I do want to depress you. So you get so frustrated you never chant bad rounds ever again. तो वास्तविकता में मैं चाहता हूँ कि आप इसको अनुभव करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खूब अच्छा नाम जप कर सकें। Have you ever chanted japa and not thought of Krishna's pastimes but thought of your pastimes, your own pastimes? तो क्या आपने कभी ऐसा नाम जप किया है जिसमें कि आप भगवान की लीलाओं के बारे में ना सोच के अपनी लीलाओं के बारे में सोचते हैं? You know, some people say Hare Krishnas are crazy. We just confirmed it today. तो कई लोग कहते हैं Definitely हरे कृष्णा वाले पागल हैं, और हम इस बात को प्रमाणित करते हैं। In my japa journey, I think one of the turning points was
a very interesting realization. तो मेरे नाम जप में एक बहुत ही ऐसा मोड़ आया जिसने मेरे नाम जप को बिल्कुल बदल दिया। जब मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ You sit down to chant japa, कि नाम जप करने के लिए बैठे, put your hands on your beads, अपने हाथ में माला ली, and as soon as you start chanting, और जैसे ही नाम जप शुरू किया you think of everything but Krishna. तो आप बाकी सब कुछ सोचते हैं कृष्ण के अलावा। Don't you think that's weird? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये क्या है ये? So I have a little mantra for you. तो मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा मंत्र है We're all personalists until we start chanting japa. कि Then we become impersonalists. कि हम सब भगवान के व्यक्तिगत रूप को समझते हैं तभी तक जब तक हम नाम जप करना शुरू नहीं करते। Not philosophical impersonalists, but relationship impersonalists. तो ये सिर्फ दार्शनिक रूप से नहीं है, खाली वास्तविक रूप में ऐसा होता है। Have you ever said, I have to finish my rounds? आपने कभी ऐसा कहा है कि मुझे अपने नाम जप पूरा करना है? Yeah, that's another one your hand should be up for. तो ये भी एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आप सबका हाथ खड़ा होना In case you haven't realized it, all my questions, the answers are yes. तो अगर आपने अभी तक अगर ऐसा महसूस नहीं किया तो मैं जितने भी प्रश्न पूछ रहा हूँ सबके उत्तर हाँ ही हैं। Krishna is present personally in His holy name. भगवान स्वयं उपस्थित हैं अपने नाम में, Personally present. स्वयं उपस्थित हैं। I think one of the biggest breakthroughs I had in Japa was Sachinandan Swami said, it's not a process, it's a relationship. तो मेरे जीवन में एक बहुत ही जो मोड़ आया जिसने मेरे नाम जप को बदला वो था जब सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने कहा कि ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये नाम जप एक संबंध है। Krishna is coming personally in His name, and if you think it's a process, you've impersonalized the whole thing. तो अगर आप सिर्फ ये सोचें कि भगवान स्वयं अपने नाम में उपस्थित हैं, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे कि भगवान के व्यक्तिगत रूप को नकारना हो गया। Like, जैसे I will give an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। This is a grihastha example. तो ये एक गृहस्थ उदाहरण है। Those who are not grihasthas, brahmacharis, this will keep you brahmachari. तो जो ब्रह्मचारी हैं ये उनको ब्रह्मचारी रखेगा। Maybe not keep you brahmachari, but it'll help you realize how it's not easy to be married. तो it's not always easy all the time. तो पता नहीं, लेकिन हाँ आपको ये जरूर महसूस होगा कि गृहस्थ जीवन में रहना इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। So I promised my wife that we're going to go out today, go somewhere at 11 o'clock. तो मैं अपनी पत्नी को ऐसा वादा करता हूँ कि 11 बजे हम कहीं जाएंगे। And then I get a phone call from my buddies. और फिर मेरे दोस्तों का फोन आ जाता है मुझे। And they say, we're going to do this and that. We want you to come. Can you come? वो मुझे कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप भी आ जाओ। And then you say, I'd love to come, but I have to go out with my wife today. तो आप कहेंगे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं आप सबके साथ आता, लेकिन मुझे अपनी पत्नी के साथ कहीं जाना है। And if you're stupid enough to say that in the hearing range of your wife, you're going to be in trouble. और अगर आप इतने बेवकूफ़ हैं कि आप अपनी पत्नी को सुनाते हुए ये बात कह रहे हैं तो आपके लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है। Because your wife's thinking, you don't want to go out with me, you want to go out with your friends, but you're going out with me because you have to. क्योंकि आपकी पत्नी को ऐसा लगेगा कि तुम अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हो, पर ऐसा दिखा रहे हो कि मेरे साथ आना चाहते हो। हाँ, हाँ। Okay. Now we all know we've said I have to chant my rounds. तो हम सब जानते हैं, हमने कहा कि मुझे अपना नाम जब पूरा करना होता है। Krishna is a person, right? कृष्ण एक व्यक्ति हैं। And you just said, और आपने कहा more or less, Krishna, I have to spend time with you. तो आपने कहा कि कृष्ण मुझे आपके साथ समय व्यतीत करना है। If it was up to me, I'd be on Instagram. But I have to chant my round, so I have to spend time with you. तो हो सकता है मैं इंस्टाग्राम यूज करता, लेकिन नहीं, मैं नाम जप करूंगा, आपके साथ रहूंगा। Now, this is interesting. तो ये बड़ा रुचिकर है। You ever ask yourself this question? आपने कभी अपने आप से प्रश्न पूछा है? Why don't I have a taste for chanting?
क्यों मुझे नाम जप में रुचि नहीं आता, स्वाद नहीं आता? You ever asked that question? Yeah. So you're telling Krishna, I have to chant, and you're wondering why you don't have a taste. तो आप कृष्ण से ऐसे कहते हैं कि मुझे नाम जप करना है लेकिन मुझे उसमें स्वाद नहीं आ रहा. You're telling your friend, I have to go out with my wife. Your wife hears it. You're wondering why she's upset. It's obvious. तो आप अपने दोस्तों को ऐसा कहते हैं कि मैं आपके साथ इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि मुझे अपनी पत्नी के साथ जाना है, और पत्नी ऐसा सुन लेती है और वो नाराज हो जाती है. ये तो साफ साफ जाहिर है. When you treat the holy name as a person, अगर आप नाम जप को एक व्यक्ति के रूप में व्यवहार who he करते हैं, is, and the chanting as a relationship, everything changes. तो कि नाम कौन है और उनके साथ अगर संबंध रूप में नाम जप करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है. When you treat it as a process, it becomes impersonal. तो और लेकिन अगर आप उसको एक सिर्फ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो ये तो अव्यक्तिगत बन जाता है. Then the goal of Japa is to chant 16 rounds. तो जप करने का जो लक्ष्य है 16 माला नाम जप करना है. The goal is not connection. जो लक्ष्य है वो संबंध स्थापित करना नहीं है. Does that make sense? क्या ये समझ Yes, में आ रहा no, है? maybe. हाँ, नहीं, Yeah. शायद. Yeah. Yes. Yes. So another realization. I mean, if you just remember that Krishna's personally there, and there's you and him in the holy name, there's a relationship already there, that changes things a lot. तो बस आप अगर ऐसा सोच लें कि भगवान अपने नाम में उपस्थित हैं और भगवान है, आप हैं और हम दोनों के बीच एक संबंध है, तो इससे ही पूरा जो नाम जप का प्रक्रिया है बदल जाएगा. So recently I've been chanting some of the Shikshastakam verses in English. तो हाल ही में मैं शिक्षाष्टकम, the unholy language of English. शिक्षाष्टकम प्रार्थनाओं को अंग्रेजी में गा रहा था. It has one minor advantage though. तो इस हालांकि ये पवित्र नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका एक लाभ है. Everyone who doesn't understand Sanskrit understands what I'm singing. तो हर कोई जो संस्कृत नहीं समझ सकता वो ये समझ सकता है मैं क्या गा रहा हूँ, Which is everybody. क्योंकि वो सबको पता है. So I was singing the 5th verse. तो ये 5वां जो प्यार है, श्लोक है. O son of Nanda Maharaj. हे नंद महाराज के पुत्र, Somehow or other किसी न किसी प्रकार से I've fallen into this ocean of birth and death. मैं इस जन्म मृत्यु के सागर में गिर पड़ा हूँ. Please pick me up and place me as an atom at your feet. कृपया करके मुझे आप अपने चरण कमलों में एक कण के समान स्थान दीजिए. I'm singing that over and over again. Please pick me up and place me as an atom at your feet. Over and over again singing it. We start to get affected by it. तो बार बार मैं जब यही दोहराता हूँ कि हे भगवान कृपया करके मुझे अपने चरण कमलों में एक And as we were singing and discussing it, I thought, oh, this is such a good verse to put us in the proper mood for chanting. तो मैं जब बार इस मंत्र का उच्चारण कर रहा था अंग्रेजी में ही सही, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि वो ये तो बहुत अच्छा है अब नाम जप करने से पहले विचार करने के लिए. Because the devotee is praying that he's saying, I am fallen in this world, I can't get out, and I need your help. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. क्योंकि इस प्रार्थना में ऐसा भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि मैं इस भौतिक संसार में गिर गया हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए यहाँ से बाहर निकालने के लिए. So, if I ask devotees, do you want to get out of material consciousness, everyone will say yes. तो अगर मैं भक्तों से पूछता हूँ कि क्या आप भौतिक चेतना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हर कोई बोलेगा हाँ. But often when I see the way devotees are chanting, I wonder if they actually want to.
पर जब मैं भक्तों को नाम जप करते हुए देखता हूँ तो मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता कि वास्तविकता में भक्त बाहर निकलना चाहते हैं इस भौतिक I mean, this prayer, I've fallen into the ocean of birth and death. Please pick me up and place me as an atom at your feet. It's a very intense prayer. तो ये जो प्रार्थना है ये एक बहुत ही गंभीर प्रार्थना है कि भगवान मुझे इस जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकालिए और अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare। The mood of chanting the holy name is a mood of hankering. तो जो भगवान के नामों का जप करने का जो भाव है, जो विचार है, वो ऐसा है कि हमें भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। It's a mood of hankering for a higher level of bhakti. तो ये एक ऐसा विचार है कि मुझे भक्ति के एक ऊपरी स्तर तक जाना है। I mean, it's supposed to be. मेरा मतलब है कि ऐसा होना चाहिए। So I think it's extremely important to be very clear about what japa is. तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ही इस बात को एकदम साफ कर लेना चाहिए कि क्या नाम जप है। We said it's not a process, it's a connection, हमने a कहा relationship. हमने कहा कि ये एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक संबंध है भगवान के साथ। It's a prayer ये एक प्रार्थना है to come to the lotus feet of Krishna, भगवान के चरण कमलों में आने के लिए, to get out of material consciousness. भौतिक चेतना से बाहर निकलने के लिए। And it's a prayer with a very strong hankering to achieve that. और ये एक प्रार्थना है इस एक बहुत ही गंभीर विश्वास के साथ कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। That's japa. तो ये जपा है। At least that much. And then you can go up from there. You can go much higher, but at least that much. कम से कम इतना तो आना ही है। उससे ऊपर शायद ना जा पाए, लेकिन ये तो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That's japa. ये जपा है। Not Hare Krishna, Hare Ram, Ram. That's not japa. तो इस प्रकार से जप नहीं करना चाहिए। It's not. I'm sorry. क्षमा चाहता हूँ, पर ये ऐसा It's नहीं not है। going to help you. ये आपकी मदद नहीं करेगा। That's not a prayer to get out of the material world. That's a prayer to get your rounds done. ये प्रार्थना नहीं Right? है इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए। ये तो सिर्फ है कि किस प्रकार से नाम जप पूरा हो। Now, one of the most interesting things I learned तो एक बहुत ही रुचिकर चीज जो मैंने सीखी is that, we say this is what the Maha Mantra means. It means, Krishna, please engage me in your service. It means many things. तो हम ऐसा कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो मतलब है कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके और भी बहुत सारे Right? मतलब हैं, Right? है ना? But it doesn't mean that if you don't mean that. हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका मतलब नहीं है। You say, oh, the Maha Mantra means, Krishna, please engage me in your service. But when you're chanting, if that's not what you're praying for and feeling, that's not what it means for you. तो जब हम नाम जप करते हैं और ये भाव के साथ कि कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए, अगर ऐसा विचार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाम जप नहीं है। Isn't that interesting? तो क्या ये रुचिकर नहीं है? I was fooling. Can I have the harmonium? I'll give you some entertainment. This is really good entertainment. You're going to like it. I'm going to teach you different meanings of the Maha Mantra. Possible meanings. You'll like this. If you're a professional kirtaniya, this is one of the meanings of the Maha Mantra. Give me money, give me money, give me money, I want money. I'll chant Hare Krishna if you give me money, 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 I want money. Yeah? That's one of the meanings. And if you're Mayavadi, I want to merge, become one, I'll chant your name to become you. And if you're full of pride, just look how good I chant Hare Krishna, I'm the greatest thing on earth. Everyone look at me, don't look at Krishna, I'm wonderful. Yeah, never. Does that happen? I think there's another one also. I think there's another. What's another one? Yeah, anyway, that's good enough for now, right? So, you can, Hare Krishna is coming out of your mouth, but what's coming out of your heart is, I want fame, I want prestige, I want recognition.
तो हो सकता है आप हरिनाम मुंह से बोल रहे हो लेकिन आपके हृदय से ये सारे भाव कि मुझे धन चाहिए, आप देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ नाम जप करते हुए। Yes? But what does the holy name mean? लेकिन वास्तविकता में हरिनाम का क्या मतलब है? Oh Radha, oh Krishna, please engage me in your service. Oh my friend, please accept me. Bring my heart closer to your heart. Oh Radha, oh Krishna. You have to translate. तो इसका वास्तविक मतलब ये है कि हे राधा हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हे राधा हे कृष्ण मेरे हृदय को अपने हृदय के पास लेके आइए। How do we sing it in Hindi? Oh Radha, oh Krishna, please engage me in your service. मुझे अपनी सेवा में लगाइए। मुझे अपनी सेवा में लगाइए। मुझे अपनी सेवा में लगाएं। So, oh Radha, oh Krishna, please engage me in your service. Oh my friend, please accept me. Bring my heart closer to your heart. That's what it means. And that's the mood. तो ये इसका मतलब है और ये हमारा भाव होना चाहिए, विचार होना चाहिए। Yes? है ना? Some of the meanings of it. तो ये इसके कुछ मतलब हैं। But unless you feel that when you're chanting, it doesn't mean that. तो ये अगर आप नाम जप करते समय ऐसा महसूस नहीं करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं बनेगा। Isn't that interesting? तो क्या ये रुचिकर नहीं है? Oh Radha, oh Krishna, give me money, give me fame and everything in this world I want to enjoy. I'll chant your name if you give it to me. So that could be your mantra also. तो हो सकता है आपका जो मंत्र हो ऐसा हो कि हे राधा हे कृष्ण मुझे धन दीजिए, मुझे। How about this one? I don't like to chant, but I have to, 'cause I took a vow to chant. Oh Krishna, help me get my rounds done before I kill myself. It's so boring. You ever have that in your mantra? तो आप में से किसी ने ऐसा कभी प्रार्थना किया है कि भगवान मैं आपका नाम जप नहीं करना चाहता लेकिन मुझे जप करना पड़ता है क्योंकि मैंने ये वाव लिया है, मैंने प्रतिज्ञा ली है और ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को मार लूं नाम जप करने से अच्छा। What's in your mantra? आपके मंत्र में क्या है? I think many devotees, that's the main thing in their mantra. तो कई अधिकतर भक्तों के लिए शायद ऐसा ही विचार होता है। Oh Radha and Krishna, please help me with what? Get my rounds done. कि हे राधा कृष्ण मेरी मदद कीजिए, लेकिन किस चीज के लिए? कि मेरा नाम जप पूरा हो जाए। Before I fall asleep, before I get bored, before I walk out and do something else, isn't it? मेरे सोने से पहले और मेरे बोर होने से पहले, बाहर जाने से पहले मेरा नाम जप हो जाए। It does not have to be like this. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। This is very sad because there's so much nectar in the name. ये बहुत दुखद है, क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में इतना रस है, इतना अमृत है। In the real name, there's so much nectar. भगवान के असली नामों में बहुत अमृत है। And the greatest favor you can do to yourself is to be in the right mood when you chant, so you can connect deeply and experience that nectar that Prabhupada wants to give you. और आप अपना सबसे भला तब कर सकते हैं जब आप इस विचार के साथ, इस भाव के साथ नाम जप करें जो कि श्रील प्रभुपाद जी हमें देना चाहते हैं। When I was developing my course on self-care, some devotees said, "Where did Prabhupada ever talk about self-care in his books?" तो जब मैं सेल्फ केयर के ऊपर अपना सेमिनार बना रहा था तो कई भक्तों ने मेरे से पूछा कि प्रभुपाद जी ने कहाँ बात करी है सेल्फ केयर के बारे में अपने पुस्तकों में। And I said, the highest form of self-care you could give yourself is to take the holy name and chant it properly. तो मैंने उनको बताया कि जो सबसे उच्चतम तरीका हो सकता है अपना ध्यान रखने का वो है भगवान के नामों का जप करना ध्यानपूर्वक। Because the holy name is glorious and it can make us glorious if we take it properly. क्योंकि भगवान के नाम की बहुत महिमा है और ये हमें भी महिमा मंडित कर सकता है।
Huh? हाँ Yeah. So, do yourself the greatest self-care and self-love, and take the holy name in the proper mood, and magic happens. Magic will happen. तो आप अपना ध्यान रखिए, सबसे अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेम दीजिए, कैसे भगवान के नामों का अच्छे से जप करके, और आप देखेंगे इससे आपके जीवन में जादू हो जाएगा। Would you like to ask some questions? आप में से किसी का कोई Do we have a प्रश्न है? microphone out there? एक माइक्रोफोन दीजिए। Do you keep your hand up, they'll Sound bring the man. microphone. Yes. This is just introduction. We don't have much time, but it's something to think about. Yes. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for the nice lecture. Prabhuji, if a person is very much conditioned, Yes. is it that he'll have more difficulty in doing good japa than a person who is less conditioned? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि इस भौतिक संसार में हम सब जो हैं वो संक्रमित हैं, कंडीशनड हैं, तो क्या कोई कम कंडीशनड होगा तो उसका नाम जप अच्छा होगा? I don't want to say yes, मैं हाँ नहीं कहना चाहता, and I don't want to say no entirely. और मैं पूर्ण रूप से ना भी नहीं कह सकता, But लेकिन I would say the individual's desire is what is most fundamental. तो ये हर व्यक्ति की अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। The holy name is so powerful it can purify anybody. क्योंकि भगवान का नाम जप इतना शक्तिशाली है And कि वो किसी को भी And साफ it- कर सकता है। yeah, and it's so important to chant it well that I would suggest no matter who you are, do everything in your power to chant it well. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या हैं, कौन हैं, पर आपके पास जितनी भी शक्ति है उससे पूरा प्रयास करिए कि नाम जप अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। I think there's an interesting connection between our desire to be Krishna conscious and how we chant the Maha Mantra. तो आपको जान के शायद अच्छा लगेगा कि एक बहुत ही सुंदर संबंध है कि आप कैसे नाम जप करते हैं और आप कैसे कृष्ण से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। I discovered something really interesting. मेरे को बहुत अच्छा कुछ मिला इस संबंध में। There's a lot of devotees have fear of surrender, like it's going to be, once I surrender, things are going to get really bad. तो कई भक्तों को शरणागति से डर लगता है कि अगर मैं शरणागत हो जाऊंगा तो शायद चीजें खराब हो जाएंगी। Maybe I won't be able to handle it. It'll be too much. और मैं शायद उसको झेल नहीं पाऊंगा, मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। I need to take it slow and easy. तो मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, आसानी से आगे बढ़ना I चाहिए। mean, it's understandable that we advance gradually. तो ये समझ में तो आता है कि ठीक है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, But there's a problem there. लेकिन इसमें एक समस्या है। If there's a fear of surrender, then how can I chant like really well? Because if I chant really well, then I'll want to surrender, but I don't want to surrender, so I don't want to chant really well. क्योंकि अगर हम इस डर के साथ, अगर हमारे हृदय में शरणागति का डर है तो हम अच्छे से नाम जप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम अच्छे से नाम जप करेंगे इसका मतलब हम पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहते हैं, लेकिन हम हृदय से पूर्ण रूप से शरणागत होना नहीं चाहते। Yeah, I was chanting really good rounds, and all of a sudden, like I just wanted to go out and conquer the universe and this and that. I just here's my go say that. तो मैं नाम जप कर रहा था खूब अच्छा, और अचानक से मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं जाके पूरे विश्व को जीत लूंगा। I'll tell you a little joke. मैं एक छोटा सा आपको जोक सुनाता हूँ। I asked a devotee, "Are you chanting your rounds today?" He said, "No, I'm not." मैंने एक भक्त से पूछा कि आप अपना नाम जप कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं कर रहा। Well, why aren't you chanting your rounds today? Why you? Not chanting today. तो प्रभु जी ने उनसे पूछा क्यों नहीं जप कर रहे आप? Oh, I have too much seva today, and if I chant, ask Krishna for more seva, then I'll be too stressed out and overworked. So today I'm not chanting. तो उन भक्त ने बोला कि मेरे पास आज के लिए बहुत सेवा पहले से ही है, और अगर मैं नाम जप करके और सेवा मांगूंगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Or at least I won't chant sincerely because he may give me more service. और मैं शायद बहुत ध्यानपूर्वक जप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं और ज़्यादा सेवा नहीं चाहता। So the intensity, the motive, the quality is it's very much connected with our desire also.
तो हमें जानना चाहिए कि हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या भावना है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम कैसे नाम जप करते हैं। Yeah. You can get so much from the holy name. आपको इतना कुछ मिल सकता है भगवान के नाम जप से। It's a really great loss if we even go one bead not chanted, one mantra not chanted properly. It's a huge loss because within that mantra is so much that we didn't get. अगर हम माले के एक मनके पे भी ध्यान पूर्वक नाम जप नहीं कर रहे तो ये हमारा इतना बड़ा नुकसान है, क्योंकि उस एक नाम से हमें इतना कुछ मिल सकता है। Thank you. धन्यवाद। Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, I wanted to ask that the service which we beg while chanting. Service what? We beg. Backed by chanting. Yes. That service is different from the service we do in our daily lives. प्रभु जी का प्रश्न है कि जब नाम जप करते समय हम भगवान से जो सेवा मांगते हैं, क्या वो सेवा अलग है जो हम अपने दिन प्रतिदिन जो सेवा करते हैं उससे? The question was, the service of chanting is it different from the service, the practical service we do? Was that the question? Yes. Yes, that's and the one question. thing, we are begging for the services, Yes. but we are already getting so many services. Okay, all right, I'll answer that. Basically, you're asking for clarification of, like even if I chant bad rounds, I get a lot of service. Right? तो प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आप ये पूछना चाहते हैं कि मैं नाम जब ठीक से नहीं भी करता तो भी मुझे बहुत सेवा मिलती है। Well, that'd be a good reason to chant more bad rounds, right? तो क्या ये कारण हो सकता है और अच्छा नाम जप नहीं करने का? Yeah. So here's something really important to understand. तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए। When we say please engage me in your service, what we're really praying for is to please help me realize that I'm a servant. जब हम नाम जप करते समय ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो वास्तविकता में हम उनसे मदद मांग रहे होते हैं कि आप मेरी सेवा करने में मेरी मदद करिए। Because I'm in master consciousness, controller consciousness and enjoyer consciousness. हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं एक सेवक के भाव में आ जाऊं, क्योंकि अभी जो मेरी चेतना है वो एक स्वामी की चेतना है। So it's not just, I already have 18 hours of service a day and I'm chanting, praying for more. I'm praying to actually realize that I'm a servant while I'm doing the service, not to be the enjoyer of the service. तो ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास पहले से ही 18 घंटे की सेवा है और मैं और सेवा मांग रहा हूँ। वास्तविकता में हम ये प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो स्वामी वाला भाव है वो खत्म हो जाए और एक सेवक वाला भाव आए। Bhaktisiddhanta gave a very interesting example. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। He said that Krishna doesn't come in his holy name until the chanter chants in the bhav, the nature of I am servant. Then Krishna descends in the name that person is chanting. तो भगवान उस समय तक नाम जप में उपस्थित नहीं होते हैं जब तक जो नाम जप करने वाला साधक है इस भाव से नाम जप करता है कि मैं आपका सेवक हूँ। तभी जब इस भाव से वो जप करता है तभी भगवान उस नाम में उपस्थित होते हैं। Do you ever think about enjoying something? क्या आपने सोचा है किसी चीज को भोगने के विषय में? You walk outside and you say, "Wow, it's nice, enjoyable weather." अब बाहर जाते हैं ऐसे कहते हैं ओ कितना सुंदर मौसम है। Oh, that flower is very beautiful. I like it. ये फूल कितने सुंदर हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। Yeah, that's the consciousness we're in often. तो ये चेतना है जिसमें हम साधारणतः रहते हैं। Oh, look at those. Look at that chadar. I'd really like to have it. वो चादर देखो जो भक्त ने डाला हुआ है, मुझे मेरे पास भी होना चाहिए। That's just normal. That's our normal way of being, right? तो ये तरीका है, ऐसे साधारण तरह जो लोग सोचते हैं रहते हैं। And every time we think like that, we forget we're servants of Krishna. और हर बार जब हम ये सोचते हैं इसका मतलब है कि हम भूल गए हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं। When I'm chanting Japa, I'm praying for that consciousness. तो जब मैं जप करता हूँ तो ये चेतना में करना है कि मैं सेवक हूँ। That I can always realize I'm a servant. ताकि मैं हमेशा
एहसास कर सकूं कि मैं आपका सेवक हूं। Here's a message for the brahmacharis, but you'll all benefit from it. तो ये ब्रह्मचारियों के लिए एक संदेश है, लेकिन आप सबको भी इसका लाभ मिलेगा। It's very easy to be a brahmachari if you realize you're a servant, because there's nothing in the world for you to enjoy because you're a servant. तो आपके लिए बहुत आसान है ब्रह्मचारी रहना अगर आप ये विश्वास कर लें कि आप एक सेवक हैं, एक नौकर हैं, क्योंकि एक सेवक के लिए कुछ भी भोगने के लिए नहीं होता। And it's very easy to be grihastha, vanaprastha, sannyasi if you realize you're a servant. और ये बहुत आसान है एक गृहस्थ होना, एक वानप्रस्थ होना, एक सन्यासी होना अगर आप ये विश्वास कर लें कि आप एक सेवक हैं। Sometimes when men get married, they forget their servants. कई बारी जब पुरुष विवाह करते हैं तो भूल जाते हैं कि वो एक सेवक हैं। So that's when we're praying for service, we're praying for the mentality of a servant. तो हम जब प्रार्थना करते हैं सेवा के लिए, a pure servant. तो ये एक इस भाव में प्रार्थना होती है कि मैं आपका एक सेवक बन सकूं। Is that okay? ठीक है? Yeah. Thank you very much, Prabhuji. In a very short time, you have wonderfully explained the importance of the holy name and how should we chant. तो प्रभु जी धन्यवाद कर रहे हैं कि बहुत ही कम समय में आपने भगवान के नामों का कैसे अच्छे से जप करना चाहिए उसके बारे में बताया। So when we chant, you said that chanting is like offering of the bhoga. So can we also meditate on a spiritual master or Srila Prabhupada? Please offer this offering to Radha and Krishna because I'm useless. Make this offering to them. तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जब हम भोग अर्पित करते हैं, जैसे आपने बताया कि नाम जप करना ऐसी है जैसे हम भोग अर्पित करते हैं, तो जब भोग अर्पण करते हैं उस समय हम गुरु से और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ, आप कृपया करके इस भोग को भगवान को अर्पित करिए। तो नाम जप के समय भी मैं भी ऐसा ही होना चाहिए। My understanding is yes, but you would do that at the beginning of your japa. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हाँ, मेरा जो समझ है कि ऐसा ही है, लेकिन ये हमें नाम जप प्रारंभ करने के समय करना होगा। Help me offer this to Krishna because it's a connection with Krishna. क्योंकि ये हमें कृष्ण को अर्पित करना है, क्योंकि ये कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। I heard once. मैंने एक बार सुना। Some devotees were chanting to a picture of Prabhupada and he said, "Why are you chanting to me?" तो कुछ भक्त जो है प्रभुपाद जी के चित्र को सामने रख के जप कर रहे थे और प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप मेरे को क्यों जप कर रहे हैं, मेरी तरफ क्यों जप कर रहे हैं। And in the Gita, Prabhupada says something like what you're saying. By the mercy of the Guru, you get the holy name, but then the connection you get, it's direct. He's like connecting you, putting your hand in the hand of the holy name, and like here, this is for you, and you can directly connect now. तो भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से संभव है, लेकिन ये कृष्ण के साथ संबंध है। जैसे गुरु आपका हाथ भगवान के हाथों में रख के और एक साक्षात संबंध स्थापित कर रहे हैं। Is that okay? Or yeah, I heard some lecture that His Holiness Chandramauli Swami Maharaj used to chant by putting a photo of Prabhupada's ear in front of him, and I mean someone told me in one of the anecdotes, and he's chanting to please the Prabhupada that my chanting should be proper, that Prabhupada's ears are pleased. I mean, you can't say it's wrong, but as far as I understand, Prabhupada wanted us. Like, yeah, I want to chant to please Prabhupada, I want to get his mercy, I want to be able to offer a pure holy name through him, but it's to Krishna we're chanting. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि इन्होंने एक ऐसे प्रवचन में सुना कि विष्णुजन स्वामी That was only the front half of the audience. Anyway, let's just go on. Hri. You want to scream? I can scream.
Does anyone else have any questions? It's back on. Yeah. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि इन्होंने ऐसा एक कथा में सुना कि विष्णुजन स्वामी महाराज प्रभुपाद जी की कानों की एक फोटो को अपने सामने रख के जप करते थे, ये भाव के साथ कि वो खूब अच्छे से नाम जप करें और प्रभुपाद जी को अच्छे से सुनाएं और उनके माध्यम से भगवान को अर्पित करें। तो हिज ग्रेस महात्मा प्रभु ने उत्तर में दिया कि मैं ऐसा कहूँगा कि पूर्ण रूप से गलत नहीं है, लेकिन भगवान के नामों का जप हमारे कृष्ण के साथ एक साक्षात संबंध है। तो गुरु के माध्यम से हालांकि हम उसको अर्पित करते हैं, पर फिर भी ये भगवान के साथ हमारा एक साक्षात अनुभव है, संबंध है। I chant the Prabhupada's murti all the time. मैं प्रभुपाद जी के विग्रह के सामने जप करता हूँ। And I'm thinking Prabhupada wants me to chant properly. और मैं ऐसा विचार करता हूँ कि प्रभुपाद चाहते हैं कि मैं अच्छे से जप करूँ। If I chant properly, he's pleased. But I'm chanting to Krishna. कि मैं अच्छे से जप करूँ और प्रभुपाद जी से प्रसन्न होंगे, लेकिन मैं नाम जप भगवान के लिए कर रहा हूँ। Come. Yeah, one more question. Maybe the Matajis, you can give them a chance. Yes. Hare Krishna, Prabhuji, Dhanvat Pranam. So my question is that this mode of seva, like we are saying that, oh Radha, oh Krishna, please engage me in your service. How can we continue this mode from the first japa of our 16 rounds till the last, and then every day and constantly? Oh yeah. Well, माता जी का प्रश्न है कि जो आपने बताया कि नाम जप करते समय ये भाव होना चाहिए कि हे राधा कृष्ण, मैं आपकी सेवा में लगूं, तो कैसे ये पहले माले से लेके आखिरी माले तक ये सेवा बनी रहे, ये भाव बना रहे? This is a very good question. It's like going on the altar. ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप भगवान के अर्च विग्रह के कक्ष में जाते हैं। You don't just run on the altar and go, here I am. ऐसे नहीं कि आप भाग के अर्च विग्रह के कक्ष में चले जाते हैं, बोलते हैं देखो मैं आ गया। You offer prayers, you do achman, you prepare yourself. तो उससे पहले आप प्रार्थना करते हैं, आचमन करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। And I wrote a book called Japa Affirmations to help prepare. तो मैंने एक बुक लिखी है जपा रिफॉर्मेशन, आपको आपकी चेतना को बनाने के लिए नाम जप करने से पहले। Because there has to be some shift, unless you're very advanced. There has to be some shift before you chant to get in the proper mood. Now I'm connecting with Krishna. It's like going on the altar. You have to get in the mood. तो अगर आप बहुत उन्नत नहीं हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को उसमें एक बदलाव लेके आए नाम जप करने से पहले, क्योंकि हम अलग अलग विचारधाराओं में रहते हैं। तो नाम जप करने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा, वैसे ही जैसे हम अर्च विग्रह कक्ष में जाने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं। We want to end on time and Janmashtami wants to say something. तो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा क्योंकि जन्माष्टमी प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। Is that okay? ठीक है। Mahatma Prabhu, thank you so much. You ended on a really good note. How to get into the right mood before starting chanting. तो जन्माष्टमी प्रभु महात्मा प्रभु का धन्यवाद करते हुए कह रहे हैं कि आपने एक बहुत ही अच्छे बिंदु पे इसको समाप्त किया कि कैसे नाम जप करते समय हमें एक अच्छे विचार में आना चाहिए, एक अच्छे भाव में आना चाहिए। By Prabhupada's mercy, I've been chanting for 46.5 years, but I found a magic formula for getting into the right mood before chanting. तो प्रभुपाद जी कृपा से मैं 46.5 वर्षों से नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत ही जादुई बिंदु मिला एक नाम जप करने के लिए। And here it is. और वो यहाँ पे है Mahatma Prabhu's Japa Affirmations book. हरिबोल। ये महात्मा प्रभु के छोटे से पुस्तक है जपा अफर्मेशंस करके। So I've been chanting now for 46.5 years. I've read all the Japa books that have been published in the movement, and I found this to be the most helpful because before I start my chanting, take 2 or 3 minutes, read one affirmation, and I'm set to go. तो मैं 46.5 वर्षों से नाम जप कर रहा हूँ और जपा के ऊपर जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं मैंने सब पढ़ी हैं, लेकिन ये जो छोटी सी पुस्तिका है मेरे को बहुत मदद करती है क्योंकि इसका एक बिंदु में पढ़ता हूँ और मेरे को नाम जप करने में बहुत मदद मिलता है उससे। So in the last 3 years I've distributed over 5,000 of these in Bangla, English and Russian.
तो पिछले 3 सालों में मैंने 5000 से ज़्यादा बांग्ला में, रशिया में, अंग्रेजी में इस पुस्तक का वितरण किया है. Now, if you want to go through a major transformation in your japa, and you don't have one yet, then go to the back. There's a books are set up there, ready to go. But one thing you got to do with this, you got to make a commitment to yourself, to Krishna, to the parampara, that every day before you start your japa, you read one of these. And if you do that, whoo, it'll be amazing. Okay? तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर आप में से किसी के पास भी ये नहीं है तो आप यहाँ पीछे एक स्टॉल है, वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं. और इसको लेते हुए आपको ये विचार बनाना है कि ये आपको वादा करना है कि आप प्रतिदिन जब शुरू करने से पहले कम से कम एक इसके अंदर जो अफर्मेशन है उसको जरूर पढ़ेंगे. और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जप में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा. So I've been following this formula for the last 5 years. Now, when I started it, my japa became the best, but it gets better and better and better and better. You don't get tired of it. It gets more and more ecstatic. तो प्रभु जी 5 सालों से इसको स्वयं अपने जीवन में उतार रहे हैं और बताते हैं कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा नाम जब बहुत अच्छा हो गया और हर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे इसको पढ़ते हैं वो और अच्छा होता जाता है. So if you don't have one, go back there quick and get one. Okay? तो अगर आपके पास before they're all gone. All right? तो अगर आपके पास नहीं है तो आप जल्दी से जाके पीछे से ले लीजिए क्योंकि बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much, Mahatma Prabhu. Hare Krishna. His Grace Mahatma Prabhu ki. Thank you very much, Prabhu, for the wonderful class. Hope all the devotees will improve the chanting. तो महात्मा प्रभु के लिए हम धन्यवाद देंगे. कैसे देंगे? हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे. We'll chant Hare Krishna Mahamantra once. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा. तो अभी हम here we are with His Holiness Chandramauli Swami Maharaj की. तो महाराज को हम स्वागत करेंगे. We'll welcome Maharaj by chanting Haridwani and Uludwani. Hari Bol! Hari Bol! Uludwani! Hari Bol! A small introduction about Maharaj, I'll read out please. Maharaj born in New Jersey, USA in 1947. Came in contact with International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, in Denver. At the age of 24, in 1973, he began practicing Krishna consciousness in New York City and shortly thereafter began serving at New Vrindavan Farm Community in West Virginia. He received initiation in 1973 from His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In 1986, he accepted the sannyasa order and began preaching in Cincinnati and Columbus, Ohio. In the early 90s,
he became involved with the ISKCON prison ministries in America and began visiting inmates, holding programs along with writing letters to inmates and sending in Srila Prabhupada's books. In 1995, he began serving as the resident sannyasi in Chicago, where he is based today. At present, Maharaj preaches in America, India, Western Europe, Slovenia, Croatia, Italy, and UK. He is an initiating spiritual master within the ISKCON society. तो महाराज जो है 1947 में जन्म लिए हैं और 73 में ISKCON में ज्वाइन किए हैं और वो न्यू वृंदावन फॉर्म कम्युनिटी में ज्वाइन किए हैं, वेस्ट वर्जीनिया में हैं और प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्ति हुए हैं 73 में और 1986 में संन्यास दीक्षा लिए हैं और सिंसिनाटी, कोलंबस और कई देशों में प्रचार करना शुरू कर दिया और जेल में प्रचार करना शुरू किए हैं। जेल में अंदर में जाकर लोग को समझाना, बुक्स, प्रभुपाद जी का बुक्स भेजना, ऐसे महाराज जी जेल मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं अभी। ओके तो तो महाराज विल स्पीक ऑन रीडिंग माई पर्पट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसिस। थैंक यू महाराज। Hare Krishna. Om Agyan Timidandasya Gyanajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobistam Staptitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadammayam Dadati Swapadantikam. Vande Ham Shiguro Shiyuta Padakamalam Shigurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahaganad Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitamscha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhischa Kripa Sindhupe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktavrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I was asked to speak about Srila Prabhupada's books, his purports, and pretty much the importance of reading and knowing Srila Prabhupada's books. तो मुझे बताया गया है कि मुझे श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें, उनके तात्पर्य और उसको कैसे अपने जीवन में अच्छे से उतारे, समझ सके, उसके विषय में बताने के लिए। I'm going to begin with one verse from the Madhya Lila. This is chapter number 25, verse number 278. And this is a very succinct, very direct statement by Srila Prabhupada in the purport, but the translation is very interesting also. तो हम यहाँ पे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 25वें अध्याय के 278 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। ये प्रभुपाद जी का एक डायरेक्ट एक प्रयास है,
उसमें हमारे जीवन के लिए क्या निर्देश है उसके विषय में बताया गया है, तो अभी हम लोग उसका पाठ करेंगे। Ye lila amrita vena kaya yara ane pane tabe bhaktira dulave jivane. Yara eke binde pane utpatlita tanumane hastagara karaye nartana. Translation: Men become strong and stout by eating sufficient grains, but the devotee who simply eats ordinary grains but does not taste the transcendental pastimes of Lord Chaitanya and Krishna gradually becomes weak and falls down from the transcendental position. However, if one drinks but a drop of the nectar of Krishna's pastimes, his body and mind begin to bloom and he begins to laugh, sing and dance. तो हरे कृष्ण, तो इसका अनुवाद है, पर्याप्त अनाज खाने से मनुष्य मजबूत और पुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो भक्त साधारण अनाज खाता है लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्वाद नहीं लेता है, वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और दिव्य स्थिति से नीचे गिर जाता है। हालांकि यदि कोई कृष्ण की लीलाओं के अमृत की एक बूंद भी पी लेता है तो उसका शरीर और मन खिलने लगता है और वह हंसना, गाना और नृत्य करना शुरू कर देता है। And Srila Prabhupada's purport is very short, but it's quite interesting. Prabhupada begins, all the devotees connected with the Krishna conscious movement must read all the books that I have translated, the Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and others. Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep, and fall down from their position. Thus, they will miss the opportunity to attain eternal blissful life of transcendental pleasure. तो बहुत छोटा अनुवाद है, तो पर तात्पर्य कि इस कृष्ण चेतना आंदोलन से जुड़े सभी भक्तों को उन सभी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जिसका अनुवाद किया गया है, जैसे चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और अन्य ग्रंथ। अन्यथा कुछ समय बाद वे बस खाएंगे, सोएंगे और अपनी स्थिति से नीचे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे आध्यात्मिक आनंद का शाश्वत आनंदमय जीवन प्राप्त करने का अवसर खो देंगे। His Divine Grace, Srila Prabhupada, in his mission for spreading Krishna consciousness around the world, made it an emphasis to translate the works of the previous acharyas in the for Srimad Bhagavatam, and as he described that these translations and his additions to those translations are actually my ecstasies in my relationship with Krishna in pure devotional service. तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनके मिशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि जितने पूर्व आचार्य हैं उनके जितने भी लेख हैं उनको उन्होंने अनुवाद किया और इन सब चीज़ों का अनुवाद किया, और वो बोलते थे कि ये सब चीज़ें जो है उनकी आनंदमयी है, भगवान के प्रति जो उनका संबंध है उस आनंद का एक प्रस्फुटन है। Srila Prabhupada would often say, and it's interesting because Srila Prabhupada would read his own books. You don't normally find a person who writes and then regularly reads their books after they write it. Everyone else reads it. तो हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जितने भी अपने पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया उन सभी का वो स्वयं अध्ययन करते थे, लेकिन सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि जो लोग अपनी पुस्तक लिखते हैं वो अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, अन्यथा दूसरे व्यक्ति उन पुस्तकों को पढ़ते हैं। Sometimes Srila Prabhupada would be sitting in the evening in the garden in Los Angeles or in his room in different places around the world, and he'd be reading his own books. तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत समय अन्य अन्य जगहों पे बैठे रहते थे, जैसे लॉस एंजल्स या उनके जो बगीचे हैं, कहीं किसी भी मंदिर के रूम में या कहीं पे भी, तो अपनी पुस्तकों का वो हमेशा अध्ययन करते रहते थे। Sometimes Prabhupada would laugh when he would read Krishna's pastimes.
तो कभी कभी प्रभुपाद पढ़ते पढ़ते उन लीलाओं का आस्वादन लेते और हंसने लगते। The devotees would watch and listen to Prabhupada as he would read, and they would think, he's reading his own books. तो भक्त लोग कभी कभी देखते कि प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, अच्छा अपनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं और वो इस आनंद में है, तो अपने में ही चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी कैसे अपनी पुस्तकों का पढ़कर आनंद ले रहे हैं। Prabhupada, they wouldn't say anything, but Prabhupada could understand what they were thinking. So he would say, these are not my words, these are the words of Sri Krishna. I am simply writing him down on paper, that's all. तो कभी कभी शिष्य लोग इस चीज़ों को नहीं समझ पाते और प्रभुपाद जी इस स्थिति को समझ पाते, तो उस समय उनके भक्तों को बोलते कि देखो ये जो पुस्तकों में लिखी गई है ये कृष्ण का शब्द है, मैं बस लिखा हूँ। So Prabhupada's books mostly were, and we say he would also add his own commentaries and understanding, but these are the words that he got in his direct relationship with Krishna. Krishna in the heart would speak to him and he would write. तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी तात्पर्य हैं प्रभुपाद जी उनको अपने जो भी उनकी रियलाइजेशन है उसके आधार पे लिखे, लेकिन ये जो रियलाइजेशन आया है ये आया है भगवान से उनके नित्य संबंध के कारण से, जो भगवान ने उनको हृदय में प्रकाशित किया। And when did Prabhupada do his writing? When everyone else was sleeping. तो प्रभुपाद जी जब ये ज़्यादातर समय ग्रंथों का जब अनुवाद किया करते थे तो उस समय सामान्यतः अन्य भक्त लोग निद्रा में रहते थे। Prabhupada would describe his schedules sometimes when devotees would ask, and he would say, I would take rest between 10:30 and 11 at night, and then I would wake up around 12:30, and then I would begin my translations. तो अन्य कई बार भक्तों ने उनसे उनके दिनचर्या के विषय में पूछा, तो प्रभुपाद बोलते ठीक है 10 से 11:30 बजे या 12 साढ़े 12 बजे तक सोऊंगा, उसके बाद उठ के इस पुस्तकों का अनुवाद किया करूँगा। And Prabhupada was always thinking how to make this knowledge understandable for the Western mentality. तो प्रभुपाद जी हमेशा इस चीज़ों का ध्यान रखते थे कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि पाश्चात्य देश के लोग भी इस चीज़ों को समझ पाएं। Taking the commentaries from the previous acharyas, Prabhupada had a book where 7 different acharyas was writing commentary on most of the verses from Srimad Bhagavatam. तो प्रभुपाद जी ये जो अपनी किताबें लिखते थे जिस एक में मतलब जो तात्पर्य, तो इसके लिए वो 7 अन्य आचार्यों की पुस्तकें लेते थे और इसमें सामान्यतः ज़्यादातर होते थे श्रीमद् भागवतम पुस्तक। And Prabhupada would meditate on, think, and how to expand that knowledge for the Western mentality, and at the same time keep the essence of the spiritual knowledge intact according to the understanding given by the previous acharyas. तो प्रभुपाद जी हमेशा इस चिंता में रहते थे कि ये श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को तो पाश्चात्य देश के लोगों के लिए प्रस्तुत करना ही है, लेकिन हमें इस प्रकार से भी प्रस्तुत करना है कि इसका जो एक सार है ऐसा ना हो कि वो खो जाए समय के प्रभाव। And sometimes Prabhupada would spend 2, maybe 1 or 2 hours on 1 or 2 verses. He would very concentrated in wanting to get it in most perfect as possible, the understanding for us. तो कई बार प्रभुपाद जी 1 से 2 घंटा लिया करते थे सिर्फ 1 और 2 श्लोकों के अनुवाद में, ताकि उस चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके प्रस्तुत कर सके कि लोग उन चीज़ों को समझ पाएं। Prabhupada understood that these books are so important in the propagation of our spreading of Krishna consciousness. तो प्रभुपाद जी समझ पाए कि यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ाना है तो इन पुस्तकों का प्रचार और प्रसार भी करना पड़ेगा, तो इसलिए उन चीज़ों पे बहुत ध्यानपूर्वक इन श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य लिखा करते थे। And he wanted us to read his books, to understand his books, to learn how to apply that knowledge in our practice of Krishna consciousness. तो प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग उनकी पुस्तकों को पढ़ें, जानें, और सबसे महत्वपूर्ण है कि इन चीज़ों को हम अपने निजी जीवन में कैसे अप्लाई करें।
I'll read one statement by Srila Prabhupada. This is a letter to Hridayananda Maharaj on January 6, 1972. He said, "You must all study very scrutinizingly all of the books so that when the need arises you can repeat in your own words their purport." Not only did he want us to read and memorize, but he wanted us to understand and how to apply this knowledge according to whatever situation we find ourselves in. तो हम लोग यहाँ पे एक पत्र का जिक्र कर रहे हैं जो हृदयानंद महाराज जी को लिखा गया था जनवरी 6, 1972 में। तो उसमें बोलते हैं कि आप सभी लोग हमारी पुस्तकों को बहुत अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए, क्योंकि जब समय मिले तो इस चीज़ों का आप दूसरे लोगों को भी बता सके और इस प्रकार से चीज़ों को समझे कि समय के अनुसार आप लोगों को इस ज्ञान को आराम से बता सकें। And then this goes on, he says, as much as possible read, chant, preach. This is our life and soul. If we keep this simple formula, then there is no doubt that we will be victorious wherever we go, and very soon we will become the only religion in the world. तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि हाँ, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहिए। तो क्या होगा? तो जब समय आएगा तुम इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रसार कर पाओगे और इतने अच्छे से प्रसार कर पाओगे कि पूरे विश्व में देखोगे कि पूरा ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन बहुत व्यापक तौर पे बढ़ गया है और सिर्फ यही एक आंदोलन है पूरे विश्व के लिए। Although Prabhupada spent so much time, energy, and his resources in bringing these books to us, he also spent a lot of time encouraging us to read and study these books. तो प्रभुपाद जी देखते हैं कि उन्होंने अपना बहुत सारा समय जितने भी सुविधाएं हो सके उन सभी सुविधाओं को पुस्तकों के अनुवाद के लिए लगाया और उसके साथ साथ ही हम लोगों के जीवन में भी उन्होंने लगाया कि कैसे हम इन पुस्तकों को पढ़ सके और अपने जीवन में उतार सके। Sometimes he would chastise. तो कभी कभी वो हम लोग को थोड़ा सा डांटते भी थे, especially the book distributors. तो मुख्यतः जो लोग पुस्तकों का वितरण करते थे उनके लिए। You're out there distributing my books. He said this here in Mayapur. तो उन्होंने मायापुर में बताया कि अरे तुम लोग मेरी पुस्तकें वितरण करते हो, पढ़ते नहीं हो। And if someone asks you, what is the book about? तो यदि कोई आपसे पूछे कि अरे इस पुस्तक में क्या लिखा है, you say, well, our teacher, he writes and we sell. That's all we know. अरे हमारे गुरुजी लिखे हैं, हम तो सिर्फ वितरण कर रहे हैं। That was in 1976. Prabhupada said that during the Gaur Purnima festival here in Mayapur. तो ये वर्ष था 1976 गौर पूर्णिमा का समय, उस वक्त प्रभुपाद जी ने ये बोला। So he encouraged us to take time to read. Sometimes he would say, read 1 hour a day. Sometimes he'd say 3 hours. Sometimes he'd say, read all day. तो सभी भक्तों को उत्साह देते कि ठीक है चलो पुस्तक पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करते करते कभी कभी बोलते कि पूरे दिन ही पुस्तक पढ़ो। There was one devotee who was reading all day. तो वहाँ एक भक्त थे जो पूरे दिन पुस्तकों का अध्ययन करते थे। It was bothering the other devotees. तो दूसरे भक्तों को थोड़ा डिस्टर्ब किया करते थे इस प्रकार से। So they came to Prabhupada. तो प्रभुपाद दूसरे भक्त लोग प्रभुपाद जी के पास आए। Prabhupada, this devotee, they mentions his name and they said, all he does is read all day. He doesn't do any service. तो बोले कि प्रभुपाद जी देखिए एक ऐसा भक्त है, कुछ सेवा नहीं करता, सिर्फ पूरा दिन भर पुस्तकों का अध्ययन लग करते रहता है। Prabhupada said, reading, that's service. तो प्रभुपाद जी बोला अरे सही में वो तो एक सर्विस कर रहा है। And then Prabhupada asked him, is he sleeping? तो प्रभुपाद जी पूछ रहे थे क्या वो पढ़ते हुए सो रहा था? No. नहीं। Then let him read. वो तो पढ़ रहा था। So Prabhupada encouraged us to take sufficient time not only to read the books but to try to understand this knowledge in a practical way. तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि सिर्फ हम पढ़े ही नहीं, इस चीज़ों को समझे भी कि कैसे इसको अपने जीवन में वास्तविक रूप में उतार सके। And then Prabhupada writes in the Bhagavatam in the first canto, first chapter, verse number 6 in the purport, he said, to hear and explain the books is more important than reading them. तो श्रीमद् भागवतम में
प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 6ठे श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें तो पढ़ना ही है, लेकिन इस चीज़ों को समझना है ताकि इसको हम अच्छे से बता सकें. Obviously, what he's saying is you have to read before you can hear and explain. तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि आप किसी चीज़ को कोई बताने से पहले क्या कीजिए, उसको पढ़िए और खुद समझिए. But he didn't want us just to read and leave it at that. तो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं चाहते कि सिर्फ पढ़ लो टाइम पार हो गया, ऐसा नहीं. Then he goes on to say, one can assimilate the knowledge of the revealed scriptures only by hearing and explaining. So it's Shravanam, Kirtanam. तो प्रभुपाद जी बताते थे कि ये जो वैदिक ज्ञान है, इसको यदि सही तरीके से यदि समझना है किसी को, तो वो सर्वप्रथम करना होगा कि उन्हें पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद ये दूसरे को भी बताना पड़ेगा. The two processes, Shravanam and Kirtanam, are primary importance to progressive spiritual life. तो भक्ति में हम लोग देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण अंग है जो शुरुआत के भक्ति के हैं, जैसे श्रवण और कीर्तन. Unfortunately, and this is a statistic, I don't know if it's changed since then. A few years ago, I was at the ISKCON Leadership Sangha here in Mayapur with all of the leaders around the world. And there was about 250 of us in one particular meeting. तो मैं एक बार यहाँ मायापुर में जब ILS एक और यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें लगभग 250 लोग थे उस मीटिंग में. तो उसमें एक सर्वे किया गया, उसमें एक आंकड़ा निकल कर आया. These are the leaders around the world, temple presidents, some GBCs, sannyasis, other regional secretaries. तो इसमें जो मुख्य थे, मंदिर के अध्यक्ष थे, GBC थे, सन्यासी थे, रीजनल सेक्रेटरी लोग थे, ऐसे बड़े बड़े मुख्य नेता थे उसमें. So one of the exercises at the meeting was to pass out a sheet of paper with all of the listings of Prabhupada's books, and we had to write next to each one how many times we read that book. तो उसमें हमें एक एक्सरसाइज दिया गया था कि उस सीट में लिखा था कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों को आपने कितनी बार अध्ययन किया है. And then all of the numbers would be collated together and then divided by the number of participants, and you get an average of how many times a person would read a particular scripture. तो उसमें जितने भक्त थे और जितनी बार लोगों ने पढ़ा, तो इन सबों का एक आंकड़ा लेकर उनका भाग किया गया और एक औसतन निकाला गया. And it was pretty sad to say that it was sometimes not even one time for certain scriptures in percentage wise. तो ये बहुत ही दुख का विषय था उस वक्त देखकर कि कुछ पुस्तकों को तो 1% भी नहीं मिला, कि एक बार भी लोगों ने उसको नहीं पढ़ा. But how much time, energy and encouragement Prabhupada gave to us and to the world to read his books, and I try to understand them also. तो देखते हैं प्रभुपाद जी ने कितना ज़्यादा जोर और अपनी जो शक्ति दी इस पुस्तकों को पढ़ने के लिए, हमें उत्साह देने के लिए कि हाँ पुस्तकों को पढ़ो और समझो. Sometimes people say, well, you know, how do you become a preacher? तो बहुत बार भक्त लोग पूछते हैं कि आप कैसे एक प्रचारक बन गए. What is the techniques for preaching? You know, sometimes they ask that question. तो आपके पास क्या ऐसा एक टेक्निक है जिससे आप इतने अच्छे प्रचारक बने? It's easy. Read. तो बहुत आसान है, आप पढ़िए. Just read, and after a while you'll preach. तो आप पढ़िए और जब समय मिले तो प्रचार कीजिए. And you'll have something to speak about also. तो प्रचार में कभी-कभी जब बोलने का अवसर प्राप्त हो तो बोलिए भी. And Prabhupada also coined that phrase. He said, preacher means reader. तो प्रभुपाद हमेशा बोला करते थे कि जो लोग प्रचारक है मतलब वो अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं. And reading is not simply getting the knowledge. It's also, there's a progression that comes by way of the process of reading. तो पुस्तकों का अध्ययन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ लिए किताबें, मतलब उसका ज्ञान आ गया हमारे पास, लेकिन ये एक आध्यात्मिक उन्नति है. We read. हम लोग पढ़ते हैं. And then we reflect back and try to understand what we're reading. फिर हम लोग उस पे गहन अध्ययन चिंतन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा.
what is this verse, what is this purport, what is it actually saying? तो उसमें हम लोग देखते हैं अच्छा ये क्या है, तात्पर्य में क्या लिखा गया, इसमें क्या है, इसको हम कैसे समझ पाएं. And you can discuss that with others. और ये आप अन्य भक्तों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं. Prabhupada used the verse, Bodhyantas parasparam katayantas chimam nityam tushyanti cha ramanti cha. Devotees find great happiness in hearing about Krishna and the process of pure devotional service and discussing it together. It brings about great joy and happiness. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे भगवद गीता में है, बोधयंतश्च परस्परम कथयंतश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि जब भक्त लोग मिलते हैं तो ये श्रीमद् भागवतम की कथाओं का, भगवान की वीरवती कथाओं का अध्ययन करते हैं और डिस्कस करते हैं एक साथ. So there's a little bit of a kind of a progression that we have developed from the process of reading. From reading, the second part is to understand. तो हम लोग देखते हैं कि पढ़ने में कैसे क्रमशः उन्नति होती है कि पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसको धीरे धीरे समझेंगे. But it's not left at that level. You go on to the next level. How does this knowledge apply in the day-to-day life in the execution of devotional service? तो हम लोग जब दूसरे स्तर में पहुंचेंगे तो देखेंगे कि इन सब चीज़ों को हम अपने प्रतिदिन के दिनचर्या में, अपनी भक्ति में उन्नति के लिए कैसे इसका हम प्रयोग कर सकें. And when we learn how to apply, then what's the next step? This is the most important. We get realization of that knowledge in practical application of our service. तो जब हम इस चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं तब वास्तव में हमें आत्म साक्षात्कार की वो ज्ञान प्राप्त होती है. Just like how many times have we heard, you're not this body? जैसे कि हम लोग कितनी बार सुने हैं कि हम ये शरीर नहीं है. Over and over we hear this statement. तो हम लोग ये बहुत बार सुने हैं, कई बार. But have we realized it? लेकिन प्रश्न है कि क्या हमने इस चीज़ों को अपने जीवन में उतार पाए हैं? If you keep hearing it over and over, it starts to work on your consciousness, and then all of a sudden, at one point, wow, I got it. तो आप यदि बार बार इस चीज़ों को सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके चिंतन में ऐसा आने लगे, हाँ मैं तो इस शरीर नहीं हूँ. This knowledge is meant to be realized, which is the ultimate principle of applying the knowledge. ये जो ज्ञान है ये विज्ञान के रूप में परिणत होगा जब हम इसको अपने जीवन में धीरे धीरे उतारते रहेंगे. And then there's one higher step. और इससे एक और ऊंचा स्तर है. That you can talk anytime, any place, anywhere to any audience about any part of Srila Prabhupada's presentations in his books. तो प्रभुपाद जी ने ये जो बताया है तो उसको आप कहीं पे भी किसी भी समय में किसी भी प्रकार के जो आपके ऑडियंस होंगे उनको आप ये चीज़ें बता सकेंगे. And by doing that, you develop spiritual skills. In other words, you develop a certain technique that becomes part of your consciousness, part of your character in presenting the knowledge. तो हम लोग जब इस प्रकार से करते रहेंगे तो हमें एक स्पिरिचुअल स्किल्स प्राप्त होगा जिसको हम लोग जब भी ज़रूरत होगा उसको हम लोग अपने प्रचार प्रसार में लगा पाएंगे. So again, go back to another part of this discussion is, why don't we read? तो सेकंड उसमें स्तर में जाते हैं कि हम लोग ये पुस्तकों का अध्ययन क्यों नहीं करते हैं. So I compiled a little bit of reasons why we don't read. तो हम लोग अभी Or कुछ we might say we don't read enough. तो अभी हम लोग देखें कि किस कारण से हम लोग ज़्यादा अपनी ये प्रभुपाद की पुस्तकों को अध्ययन नहीं करते हैं. Don't have any time. हमारे पास समय नहीं है. Too many things to do. बहुत सारे चीज़ करने के लिए हैं. Yeah, the books are, well, okay, they're there. They look nice on the shelf. तो जो पुस्तकें हैं बहुत सुंदर लग रही हैं और उसको हमने अलमारी में भी अच्छे से रखा है. Once in a while I read something, but तो कभी कभी मैं उसको देखता हूँ लेकिन or there's other things that are more important, that are more interesting than Prabhupada's books. तो हाँ पुस्तकें हैं लेकिन पुस्तकों से भी ज़्यादा रोचक चीज़ और अन्य चीज़ें हैं. Or I can't understand them. The language is very highfalutin English, and I'm not so good at that, and so better I just hear from someone else. Why read? तो इसमें जो अंग्रेजी लिखी हुई है वो तो बहुत उन्नत स्तर की है. मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ. मुझे लगता है कि दूसरे भक्तों से सुन लेना ही अच्छा है.
Or we're afraid of becoming too Krishna conscious and we lose our connection with Maya. तो हम लोग सोचते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो लगता है माया से हमारा संबंध टूट जाएगा. Oh my God. Oh my God. It says I have to come to the stage of Sudanam and chanting. Oh my God. अरे क्या होगा, मैं इसको ज़्यादा पढ़ लूँगा तो मैं शुद्ध नाम की अवस्था में पहुँच जाऊँगा. If I do, then there'll be nothing left of my life in this material world. अरे इतना ज़्यादा कर लूँगा तो इस जड़ जगत में मेरा कुछ बचेगा ही नहीं. I might become too intelligent. और मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाऊँगा. And then how can I have fun? तो मेरे जीवन में आनंद कहाँ बचेगा? So, we might find different reasons why we don't want to read or we don't think it's important to read. तो हम लोग हो सकता है अपने जीवन में कई अन्य कारण भी ढूंढ पाएं कि हम क्यों प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहते हैं. I read, yeah, I like to read. हाँ, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. Do you read Prabhupada's books? No, but I read. या तुम पढ़ते हो? हाँ, मैं पढ़ता हूँ. Well, of course, in our ISKCON society, we have books about Prabhupada's books and also books about other topics related to pure devotional service. But to sacrifice that in place of Prabhupada is really completely opposite of Prabhupada's vision for our development in Krishna consciousness, because he said, everything is there in my books. तो हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों के ऊपर ही बहुत सारे पुस्तक है, उसके अलावा भक्ति के ऊपर भी बहुत सारे पुस्तक है. लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि प्रभुपाद बोलते थे कि मेरी पुस्तक में ही सभी चीज़ें मौजूद हैं. So I also read other books by other devotees in our movement, but I never put down Srimad Bhagavatam. Every day has to have Bhagavatam. तो हाँ, मैं भी अन्य अनुवादकों की पुस्तकें पढ़ता हूँ, लेकिन मैं श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता. मैं श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें स्पेशल श्रीमद् भागवतम अवश्य पढ़ता हूँ प्रतिदिन. And it's amazing. Prabhupada said every subject that you could possibly think of is in Bhagavatam. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा कोई विषय नहीं है जो मेरे पुस्तकों में अवेलेबल नहीं है. Except how to make money. लेकिन इसका एक अपवाद है, कैसे पैसा बनाया जाए ये नहीं है वहाँ. Yeah, that one's not there. तो ये वो वहाँ पे नहीं है. There's a separate Bhagavatam for that one. तो उसके लिए एक सेपरेट भागवतम है. But the essence of spiritual life and all of the interesting aspects of our Krishna conscious practice and all of the topics that are related to Krishna consciousness, which is so many, is found within Srimad Bhagavatam. तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी अन्य We can't hear, huh? Somebody working on it? Okay. Hare Krishna. कृष्णा Everybody. हरे 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 राम Krishna, हरे राम Hare राम राम हरे. Krishna Krishna. तो Hare हम Hare. लोग देखते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के अन्य अन्य जितने भी क्षेत्र हैं या जो भी चीज़ है, उन सभी चीज़ों का कुछ न कुछ ये श्रीमद् भागवतम में उपलब्ध है. And sometimes we don't read, we think, well, yeah, when I first started, I read all the books and I know them all. That's all. तो कभी कभी ऐसा मन में होता है, अच्छा अरे पहले तो पढ़ चुका हूँ, जानता ही हूँ इसको, लगता है. Yeah, I read Bhagavatam, I read Gita, I read Nectar of Devotion. अच्छा मैंने भागवतम पढ़ लिया, नेक्टर ऑफ डिवोशन भी पढ़ लिया है. I know them. मैं जानता हूँ. I read them. मैंने पढ़ा है उनको. No. Prabhupada said, in order to read, to understand, repetition is very much important part of it. तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि यदि बार बार पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ही ये संभव है. ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के हम समझ जाएंगे, बार बार पढ़ना होगा. It's important to understand the importance of repetition. तो हमें ये पुनरावृत्ति की जो महत्व है इसको समझने की आवश्यकता है. It's like
devotees in the early days, they came across Bhakti Siddhanta Saraswati's purport to Brahma Samhita. तो शुरुआत के समय में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ब्रह्म संहिता की जो परपट थे उसके संपर्क में जब भक्त लोग आए, and we know from our own experience his English is not even understood by people who speak English. तो हम लोग जैसे जानते हैं कि उनकी जो इंग्लिश लिखी गई थी वो अंग्रेजी भक्तों के लिए भी बहुत मुश्किल थी समझना. You have to keep a dictionary there and stop every couple words and तो हम लोग एक बहुत बड़ा डिक्शनरी रखे हुए थे जिसको बार बार देखते थे इसको चीज इन शब्दों को समझने के लिए. So Prabhupada, they went to Srila Prabhupada and said, Prabhupada, can you write an explanation on your Guru Maharaj's explanations on, Brahma Samhita? तो भक्त लोग गए और श्रीला प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी क्या आप हम लोग को सरल भाषा में कुछ लिख के बता सकते हैं जो आपके गुरु महाराज ने लिखा है ये ब्रह्म संहिता. Prabhupada said no. बात बोले कि नहीं. He said if you want to understand, read it, reread it, reread it. If you keep doing that, it comes gradually, it starts to it becomes clearer and clearer. So repetition brings out the knowledge more and more. When you think about what you're reading at the same time you repeat that reading part. तो जितनी बार हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे तो इसी चीज़ों पे प्रभुपाद जी जोड़ दिए थे कि नहीं मैं तो बदल नहीं सकता, तुम्हें क्या करना होगा, पढ़ना होगा. कितनी बार पढ़ना होगा, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते एक बार समझ में आएगा तुम्हें. So there's so many reasons why, and I have a whole list. I just mentioned about 3 or 4 of them. I have about 15 reasons why people find reasons not to read or not to read in a qualitative way. तो हम लोग यहाँ पे 3 और 4 कारणों का वर्णन किए हैं, लेकिन मेरे पास 15 ऐसे कारण ऑलरेडी है जो मैं लिख के ले आया हूँ कि क्यों भक्त लोग क्वालिटी टाइम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने में नहीं देते हैं. And Prabhupada said, my books will be the law books for the next 10,000 years. तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरी पुस्तक जो है भविष्य के 10,000 वर्षों तक लॉ बुक के रूप में मौजूद रहेगी. What he was saying is that any situation that will come up, you can always refer to my books and all the answers will be found there. तो प्रभुपाद जी बोलते थे कोई भी स्थिति आए, यदि तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मेरी पुस्तकों में जाओ और तुम उसका उत्तर अवश्य पाओगे. Prabhupada included everything. तो प्रभुपाद जी ने सभी चीज़ों का उसमें समावेश किया है. And he also said, in our temples, he gave some formula for temple worship. तो उन्होंने अपने मंदिर की पूजा अर्चना कैसे की जाए इसके विषय में भी उन्होंने बताया है. He said we should have seminars, classes and discussions on philosophy all day. तो बोल रहे थे कि he said all throughout the whole day. तो सेमिनार होना चाहिए, क्लासेज होना चाहिए, इस जो हमारे दर्शन है उसके विषय में पूरे दिन भर. And he said in the evening we should have 3 hours of kirtan. और शाम में 3 घंटे का कीर्तन होना चाहिए. He writes that in Chaitanya Charitamrita. वो ये चैतन्य चरितामृत में उन्होंने ये लिखा है. He wanted our temples to be more focused on transcendental knowledge, and when people come in, they start to understand what is our movement by hearing the classes, by asking questions, by participating in the discussions. तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे, उनका बहुत मुख्य जो फोकस था कि हम कैसे आध्यात्मिक ज्ञान को बाहर से यदि बात करें या हम लोग से मिले तो हम लोग उनको बता पाएं कि ये कृष्णा कॉन्शियस क्या है, इसको कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं. So what is the results for not knowing the philosophy or not getting enough exposure to transcendental knowledge? तो यदि हम लोग को यदि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगी या हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो इसका क्या परिणाम हो सकता है. We won't be able to speak on behalf of Srila Prabhupada. तो हम श्रीला प्रभुपाद जी के एक प्रतिनिधि के रूप में इसका बोल नहीं पाएंगे किसी को. Or we might speak in the wrong way, thinking we know without really understanding. या हम लोग हो सकता है कि हम लोग सोचे कि हम जानते हैं लेकिन हम इसका दुष्प्रचार ही कर देंगे. We may also find ourselves becoming more attracted
to the material energy. और हम लोग ये जड़ जगत के जो माया शक्ति उसकी ओर और ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे. And Prabhupada writes that here. We read the verse at the beginning. He says, unless all of the devotees read all of the books we have, and this is in the beginning. There was 4 main books at the time. Prabhupada was translating volume by volume Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita had already been there, and then he did a second version when the first version was lost. Then Nectar of Devotion, and then Sri Upanishads. He said also Chaitanya Charitamrita, which in the beginning was teachings of Lord Chaitanya. Then it expanded into Chaitanya Charitamrita. तो हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी की जो शुरुआत की पुस्तकें थी, जिसे प्रभुपाद जी बहुत जोर दिए हैं कि यदि हम लोग नहीं उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे तो कैसे पतन में हमारा पतन हो सकता है. तो शुरुआत के समय में हमारे पास पुस्तकें थी श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का जो सेकंड, क्योंकि पहला वाला छोटा वर्जन था और जो बाद में प्रभुपाद जी दूसरा निकाले पूरे तात्पर्य के साथ. फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन था, श्री विश्वोपनिषद था और ये चैतन्य चरितामृत. लेकिन प्रभुपाद जी पहले लिखे थे श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी टीचिंग्स, उनकी शिक्षाएं, उसके विषय में बाद में चैतन्य चरितामृत भी हमें उपलब्ध हुआ. So here's another topic: how to find time and how to develop a taste for reading Srila Prabhupada's books. तो यहाँ पे एक मुख्य विषय है कि हम कैसे इस पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय निकालें और उसमें अपनी रुचि पाएं. Pray to Krishna. भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए. My dear Lord, I don't have no taste and time is little. Please do something. भगवान श्री कृष्ण, देखिए मेरे पास तो कुछ रुचि नहीं है और समय भी बहुत कम है, तो कृपया कर मुझे कुछ मदद कीजिए. Force yourself. अपने आप को उसमें और ज़्यादा जोड़ दीजिए. This is a very interesting principle that you may not have the taste for reading, and many devotees feel that way sometimes. They would rather be doing something else or feel that it's more important to do something else. But when you start reading, the taste may not be there, but as you continue to read, because the knowledge is transcendental, it is coming from the spiritual world, it's coming from the heart of the pure devotee's realization on Krishna. Gradually, it works in such a way as to starts to purify the consciousness, and then the taste for reading becomes more and more and more. तो लोग देखते हैं कि शुरुआत में हो सकता है कि हमें इस ग्रंथों को पढ़ने के लिए रुचि ना हो, समय भी ना हो, बहुत सारे कारण हो, हम लोग सोचते थे नहीं पढ़ेंगे. लेकिन आप पाएंगे कि यदि आप एक बार अपने को थोड़ा जोर देकर इन ग्रंथों का अध्ययन करने लगे तो आप में परिवर्तन होगा. क्योंकि एक शुद्ध भक्तों की ये जो वाणी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो धीरे धीरे आपके चित्त में परिवर्तन होगा और आप देख पाएंगे कि आपको और रुचि आ रही है, और जितना पढ़ रहे और रुचि आ रही है. Another way is to start little reading groups with maybe 2 or 3 devotees at the most, and just read together. शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 भक्तों का समूह बनाएं और साथ में ही ग्रंथों का अध्ययन करें. And then discuss. और पढ़ने के पश्चात उस चीज़ों को डिस्कस कीजिए अपने में. When you're traveling from place to place, जब आप कभी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, carry a book with you. आप श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तकें अपने साथ रखिए. Especially if you go on a plane, what do you do on a plane? Nothing, sleep most of the time, right? जैसे यदि आप हवाई जहाज में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? ज़्यादातर समय हो सकता है आप सोते हुए बिता दें. Great time for reading. तो बहुत अच्छा सुअवसर है कि आप पुस्तकों का अध्ययन कर पाएं. When you're standing in line at the airports or any other queue, have a book, start reading. तो यदि आप एयरपोर्ट पे या कहीं और पे भी ऐसे किसी लाइन में खड़े हैं तो आपके पास तो और कुछ नहीं है, यदि पुस्तकें रहेंगी तो उस वक्त पुस्तकों का अध्ययन कर पाएंगे. Create reading retreats where devotees come and they read, discuss, and then try to understand deeper. Do it in a larger group. तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे रिट्रीट है, तो पुस्तक अध्ययन का भी एक रिट्रीट कीजिए, बहुत सारे भक्त आए और उस चीज़ों को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए. Because when Maya attacks, and Maya does attack, तो जब माया आप अटैक करेगी तो माया तो अटैक करना ही है.
when you know the philosophy and you have a working understanding, you can see Maya when she's coming. तो जब आपको ज्ञान होगा तो आप देख पाएंगे कि हाँ माया आ रही है. And you can immediately apply the understanding of your knowledge that you've gotten from Srila Prabhupada's books. तो जब यदि आपको ये ज्ञान होगा श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तक में लिखा है, तो जब माया आएगी तो उस ज्ञान का आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे. Sometimes devotees get overwhelmed and sometimes succumb to the temptations of the external energy because they don't have any shelter. The shelter is, take shelter of knowledge, transcendental knowledge. तो बहुत बार होता है कि माया जब आती है तो अपने बहुत सारे प्रभाव और अनेक चीज़ों से भक्तों को प्रभावित कर देती है. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई शेल्टर नहीं होता है. तो हमें किस चीज़ों का शेल्टर लेना है? तो ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है. इसका यदि हम शरणागत होंगे तो हम इस माया के प्रभाव से बच पाएंगे. And another important thing, about a couple years ago I gave a seminar which was created by one of my dear god sisters, Lakshmi Moni. She put together this slideshow, PowerPoint. Why now more than any other time is it important for reading and studying Srila Prabhupada's books? तो कुछ सालों पहले मेरी एक गुरु बहन गॉड सिस्टर लक्ष्मी मोनी माता जी, उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सुअवसर दिया जिसमें मैं बताया कि क्यों अभी श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है. And one of the points that was made is that as time goes on, we start to lose, or time has a way to change things, and we lose our connection with Srila Prabhupada's transcendental knowledge unless we stay with that through the process of reading, understanding, and applying. तो हम लोग देखते हैं कि यदि ये श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथों को यदि हम अपने जीवन में नहीं पढ़ेंगे और नहीं उतारेंगे तो समय के प्रभाव में क्या होगा कि धीरे धीरे इससे हमारी रुचि चली जाएगी. Okay, so I could speak a little bit more on this subject, but I think maybe we can open it up to questions, and if there's no questions, I'll speak a little bit more. तो मैं इस पे और कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन देखता हूँ यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो लूँगा, नहीं तो हम लोग इस पे और ज़्यादा चर्चा करेंगे. Anyone? Do we have a mic? Some microphones in the audience there? There's some, questions there. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for the wake-up call. In many times, when you gave those statistics from the leadership Sangha, it was we had heard about this before, but it was really a wake-up call. I was there. Yeah, it was like shocking. तो महाराज बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे एक जगाने वाला कॉल दिया और जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए बहुत ही चमत्कारिक है. But we had some outstanding persons also. तो मैं भी उस सेमिनार में था और बहुत सारे अन्य भक्त भी थे. One of our sannyasis had read Bhagavad Gita 130 times. So. तो उसमें एक बहुत ही अद्भुत भक्त थे, एक सन्यासी जिन्होंने 130 बार भगवत गीता का अध्ययन किया है. So, yeah, if you make time, you'll see that you can still do everything else that you need to do, because this knowledge expands your consciousness, gives you transcendental understanding, transcendental vision, and it applies to all aspects of our day-to-day life, where we can actually move through the day in a more clear and direct way. तो यदि देखेंगे, यदि आप समय निकालेंगे तो इस चीज़ों को आप अपने जीवन में उतार पाएंगे, और जैसे जैसे देखते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान होगा हमारी जो चेतना है वो और शुद्ध हो जाएगी, और इसका हम लोग वास्तविक अपने जीवन में प्रभाव भी देख पाएंगे. What to speak about the importance of transmitting this knowledge in the form of preaching in different ways. तो मैं इसको और क्या बताऊं जब आप इसको अपने जीवन में उतार के इसको और दूसरे लोगों को प्रचार में लगाएंगे. I had a question on this, which is that I seek your inspiration to understand this better, which is that when I prepare for a lecture, somehow it's extraordinary turnaround time. I can read more, I can read better, I can read in depth. But when I am on my own and I seek to find time to study, the inspiration is just not there. So it seems to be like there is a fruitive mentality in study also. So how does one overcome this? Well, you have to do that one. Maharaj, can I translate? Maharaj.
Yeah, go ahead. तो मेरा एक प्रश्न है कि मैं देखता हूँ कि कभी कभी जब मुझे कक्षा देनी होती है तो मैं तो बहुत जोर देकर ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ, लेकिन जब खुद का पढ़ना होता है तो उतना ध्यान नहीं लगाता हूँ। तो क्या ये मेरा एक फ्रूटिव मेंटलिटी है, इससे हम कैसे निकले, थोड़ा इस विषय में बताइए महाराज। It's not fruitive, it's just that there is a requirement because you're going to make a presentation or you're going to have to inspire others by what you say. So you get serious and you do all of that work. That's nice and it's important and we do that regularly. तो हम लोग देखते कि नहीं ये तो फ्रूटिव नहीं है, क्योंकि आप जो प्रेजेंटेशन देंगे तो बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित होगा, तो आप उसमें एक अच्छा से प्रयास कर रहे हैं, तो हाँ ये ठीक है। But aside from that, Prabhupada spent so much time, energy, and gave so much importance to his books and how these books were the foundation for everything we do in this world, everything we do, and how we can impact the whole world with this knowledge. So we want to be an instrument in some way or other to assist Srila Prabhupada in spreading Krishna consciousness. तो हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी कितना ज़्यादा समय दिए इस पुस्तकों में, और यही देखते हैं वास्तविक में ये सभी चीज़ों का एक प्रकार से फाउंडेशन है। तो और प्रभुपाद जी इसमें बहुत ज़्यादा समय दिए, जोड़ दिए, तो हमें श्रील प्रभुपाद जी को मदद करना चाहिए जिससे प्रभुपाद जी पूरे विश्व में इसको और प्रचार प्रसार कर पाएँ। And aside from that, I didn't even mention the knowledge of Krishna and Krishna's pastimes, Krishna's relationships with his devotees, Krishna's intimate association with his devotees in Vrindavan. All of this is part of the transcendental knowledge that Prabhupada gave us. तो प्रभुपाद जी जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिए उसमें है कृष्ण, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के भक्तों के साथ संबंध, और स्पेशली जो वृंदावन के भक्त थे उनके साथ जो उनकी अंतरंग संबंध, तो ये सब चीज़ें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का एक पार्ट है। I'll give you a little maybe clue or tip that I used in order to keep connected with the Bhagavatam. This is something I did. तो मैं आपको क्लू कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो मैं अपने निजी जीवन में स्वयं उसको उतारता हूँ। I decided to go through the entire Bhagavatam verse by verse and simply look through the particular verse and purport to find some of the essential points, pick out one essential point and copy and paste that, and then keep a whole listing verse by verse. So that became a project, the verse by verse. So it was an inspiration to keep reading in that way. So you can do something similar. Yeah. तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि श्रीमद् भागवतम पकड़ता हूँ, उसमें प्रत्येक जितने श्लोक हैं उनके अनुवाद तात्पर्य पढ़ता हूँ, और उसमें से जो मुझे लगता है कि ये बहुत इसेंशियल है इस पूरे तात्पर्य में, उसको मैं छोटे छोटे करके रखता रहता हूँ, और इस प्रकार से मेरे पास बहुत ज़्यादा जो इसेंशियल पॉइंट्स है होते जाते हैं, और धीरे धीरे मेरा उत्साह और बढ़ता जाता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। Or you could say, well, I'm going to tell at least one person every day something I read. या मैं एक व्यक्ति ऐसा अवश्य दिन में जिनके साथ मिलूंगा उनको मैं बताऊंगा कि मैं आज क्या पढ़ा। And that forces you to read regularly. और ये आपको उत्साह देगा कि हाँ मैं और पुस्तक अच्छे से पढूं। So we need some kind of vow, some kind of program to keep us focused. तो हमें कुछ ऐसे व्रत लेने चाहिए या कुछ ऐसी तपस्या करनी चाहिए कि हाँ हम ऐसा प्रतिदिन करेंगे, तो ये हमें उत्साह देगा। We have to admit there are different types of personalities. तो हम लोग को ये यहाँ पे अवश्य स्वीकार करना हो कि यहाँ अन्य मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। Some devotees are more scholarly oriented, so for them reading is natural. And तो कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर टाइप के भक्त होते हैं जो उनको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। And others are more inclined to perform services. और दूसरे टाइप के भक्त होते हैं उनको सेवा करने में बहुत आनंद आता है। And not read so much. तो वो लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। But still, for both categories, there should be an element of exposure to Prabhupada's books. लेकिन दोनों के लिए ये जरूरी है कि वो लोग जैसे प्रभुपाद जी की पुस्तकों कैसे वो एक्सपोजर उन्हें मिले और पढ़े हुए। Yeah, so that was Prabhupada's instruction for us. तो श्रील प्रभुपाद जी का निर्देश है हमारे लिए। Thank you very much, Maharaj. Okay. धन्यवाद महाराज जी।
Hare Krishna Maharaj. Maharaj, thanks for supporting this, how we read Prabhupada books. My question is like, Maharaj, if one person's... Little bit, just turn up the volume a little bit on the microphone there. If one person says like, I am sufficiently hearing, I'm reading suppose 3 to 4 hours or 5 hours, I am hearing Prabhupada lectures or maybe other his disciples lectures, so why I need reading, can you why reading is more important if one person is sufficiently hearing? Well, hearing. तो एक प्रश्न है कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो पूरे दिन भर बहुत ही ज़्यादा प्रभुपाद जी की जो लेक्चर है वो सुनता हूँ, उनके जो शिष्य हैं उनकी लेक्चर सुनता हूँ, तो मुझे इतना पढ़ने की आवश्यकता क्या है? तो इसके विषय में आप थोड़ा कुछ बताएं महाराज. Yeah, that is correct, no doubt. But हाँ वो सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन but when there's an element that allows you to study when you read. You can actually start to read, try to understand, go back over, and that allows you, for the process of holding the book and reading it, it gives you that extra element. When you're hearing, it's purifying, no doubt, and you're also getting the knowledge. So, of course, that is our tradition. That's how everything started. But you see, as we understand that years ago there weren't any books. People would get transcendental knowledge from the Guru directly. Sri Yushu Upanishads, Upanishads means Upanishad. It means to sit down near. So what does that mean? Sitting down near the Guru, the disciple would hear, and then he would learn, and he would also pass that knowledge on to his followers. हाँ तो ये बहुत सही है, लेकिन हम लोग जैसा देखते हैं कि यदि हम बहुत ज़्यादा श्रवण किए हैं तो श्रवण करने से क्या होगा कि हमारे हृदय में चेतना चित्त का शुद्धिकरण होगा और धीरे धीरे हम जाके पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और इसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे. जैसे हम लोग देखते हैं कि श्री उपनिषद है, तो उपनिषद में जैसे बोलते हैं कि गुरुदेव के नज़दीक में बैठना मतलब उनसे श्रवण करना और फिर इसको पास करना. हाँ, सिट डाउन नियर मतलब किसके? गुरु के नज़दीक में, तो उससे उनसे क्या करना? श्रवण करना नज़दीक में बैठकर और फिर उस परंपरा को पास करना. ये पहले के जैसे परंपरा थी. So we understand and we hear that in this age particular, our memories and our ability to repeat is somewhat deficient as compared to was 5,000 years ago. तो हम लोग देखते हैं कि so that's why books came in. तो हम लोग देखते हैं जो 5,000 साल पहले जो हमारी स्मरण शक्ति और रिपीट करने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे जिससे कम हो गई है, इसीलिए हमारे पास अभी पुस्तकें हैं. And it says in the Bhagavatam that Srimad Bhagavatam is non-different than Krishna. और श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया कि श्रीमद् भागवतम और भगवान श्री कृष्ण इसमें कोई पार्थक्य नहीं है. Bhagavatam is worshipable. भागवतम को आप पूजा कर सकते हैं. Some temples they put the Bhagavatam on the altar, they do puja to it, they put a garland on her. तो कई मंदिरों में हम देखें कि श्रीमद् भागवतम ही उनके ऑल्टर में एज ए विग्रह के रूप में है और उनको पूजा करते हैं. It's a deity. It's in transcendental. It's Krishna in transcendental sound. तो ये आध्यात्मिक ध्वनि है जो इस विग्रह के रूप में मतलब भागवतम के रूप में है जिनकी हम लोग पूजा करते हैं. I think both are good, but I think Srila Prabhupada emphasized the importance of actually reading his books also. तो प्रभुपाद जी जोर दिए हैं कि हमें पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए. दोनों में कोई अंतर नहीं है. Thank you, Bharat. Okay. One of the ladies on this side here. तो माताओं की तरफ से एक ले लेते हैं. Okay. Hare Krishna Maharaj, please accept my respectful pranams. Can you hear me? Little louder? Yeah. Am I okay? Thank you so much, Maharaj, for Krishna. putting up the importance of Prabhupada's books.
this is my personal realization. My problem that I'm facing is I tend to read Prabhupada's translations word to word, but I'm skipping the purports. You know, how do I fix myself? Yes. Yeah, don't skip. तो महाराज जी मेरे एक प्रश्न है और एक समस्या भी है कि मैं शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें तो पढ़ती हूँ, पढ़ती कैसे हूँ, प्रत्येक शब्दों को पढ़ती हूँ, उनका अनुवाद पढ़ती हूँ और अनुवाद भी पढ़ती हूँ, लेकिन तात्पर्य को छोड़ देती हूँ, तो क्या करूँ? Let me ask you, why? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों ऐसा करती हैं? It goes above. ये मेरे चिंतन से ऊपर चला जाता है. From my understanding, the verses are more harder to understand. The purports are meant to bring out the meaning of the verses. तो मेरे अनुसार तो जो श्लोक है और उसके अर्थ है वो थोड़े कठिन है, उसको समझाने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य को लिखा है. And the purports are Prabhupada's. Prabhupada said these are my ecstasies in transcendental knowledge. तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये तो मेरे ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसीज हैं, ये हमारे आध्यात्म का जीवन का. And so Prabhupada's books are not just philosophy, it's the realization of the pure devotee based on the knowledge of that's given in the verses. तो ये सिर्फ हमारे विचार या चिंतन नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद जी के जो आध्यात्मिक रिवोल्यूशन है वो है जो प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में लिखी हैं. If it's a matter of time and you want to do so much in a certain time period, then just read less but put more emphasis on reading the whole thing. So you'll see, you'll be amazed to see how much that Prabhupada brings out in the purport that's relevant to the translation. तो यदि आपके पास समय का ऐसा कुछ अभाव है तो थोड़ा कम पढ़िए, मतलब श्लोकों की संख्या कम कीजिए, लेकिन अनुवाद अवश्य पढ़िए. तो जब आप प्रभुपाद जी की अनुवाद और तात्पर्य को जब पढ़ेंगी तब आप समझ पाएंगे कि प्रभुपाद जी उन चीज़ों को समझाने के लिए कितना सही तरीके से लिखे हैं, और तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे और अच्छे से. How much do you know about tennis? आप टेनिस के विषय में कितना जानती हैं? Okay. अच्छा. All right, we don't care so much about tennis. तो हम लोग टेनिस के विषय में उतना ध्यान नहीं देते. But Prabhupada explains in the pastime with Devahuti when she was playing with a ball. तो देवहूति जी का एक सेक्शन आता है श्रीमद् भागवतम में, वहाँ श्रील प्रभुपाद जी बॉल के विषय में बताते हैं. Prabhupada explains why tennis was created. तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि टेनिस कैसे बना या क्यों बनाया गया. Some people are laughing because they know the answer. तो कुछ लोग हंस रहे हैं क्योंकि वो इसका उत्तर जानते हैं. Prabhupada said tennis was created by the demons so they could look at the form of women when they hit the ball, you know. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये असुरों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि जब महिलाएं से बॉल खेलेंगी तो वो असुर लोग महिलाओं को उस गंदी निगाहों से देखेंगे. You won't read that in the translation. वो आप वो अनुवाद में नहीं पाएंगे. So Prabhupada's purport, some of his purports are quite humorous too when he speaks. तो प्रभुपाद जी की जो बहुत सारे तात्पर्य हैं उसमें बहुत विनोदमयी आनंद पूर्वक प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे चीज़ों को लिखे हैं. You'll be amazed what Prabhupada says in some of those purports. तो आप जब पढ़ेंगी तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में ऐसे लिखे हैं. One thing he emphasizes that many purports he glorifies the chanting of the holy name and the importance of chanting of the holy name. तो बहुत सारे आप तात्पर्य में देखेंगे प्रभुपाद जी जोड़ दिए हैं ये भगवान के दिव्य नाम और उसके जाप के विषय में. So if we're inclined for chanting and we're really trying to develop our chanting, we get a lot of knowledge from Srila Prabhupada's purports on the power of the holy name, how the holy name is, as Prabhupada said, it is the panacea for solving all problems on all levels. तो आप देख पाएंगे कि ये जो भगवान का दिव्य नाम है कितना पावरफुल है, और ये सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, ये पर भगवान का जो नाम है ये एक रामबाण है. You'll be amazed what's in those purports. It's unbelievable. तो आप पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्योंकि प्रभुपाद जी इस प्रकार से इस चीज़ों को लिखे हैं. How Prabhupada takes the translation. Sometimes he goes off on a tangent and speaks about something that's connected but not directly to the verse, and it gets interesting. तो कभी-कभी आप जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो
अनुवाद में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी उस उदाहरण को लेकर उस अनुवाद के साथ इस प्रकार से जोड़ेंगे कि आप पूरे विषय वस्तु को और अच्छे से समझ पाएंगे. Sometimes he talks about what's happening in ISKCON in the purports. और कभी-कभी वो अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ISKCON में क्या हो रहा है अभी. Yeah. I can give you an example of that. मैं उसका एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ. When they were opening the Krishna Balaram temple in Vrindavan. एक बार जब वो कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में जब ओपन हो रहा था, So Prabhupada could understand that simply to do Harinam Sankirtan is sufficient to open up the temple. That was the yagya. तो प्रभुपाद जी को ये पूरा ज्ञात था कि ये भगवान के दिव्य नाम ही सफिशिएंट है जब हम मंदिर उद्बोधन कर रहे हैं या उद्घाटन कर रहे हैं. But Prabhupada could understand, being in Vrindavan with all of these mahants and leaders of other mosques and temples, if we simply did that, they wouldn't think our temple was a bona fide tradition. तो प्रभुपाद जी जानते थे कि वहाँ के जितने अन्य मठों के जो आचार्य लोग हैं या जो अन्य अन्य लोग हैं, वो लोग हमारे मंदिर को ऑथराइज्ड मंदिर के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे. So Prabhupada goes into the whole purport explaining, we could have simply did Harinam Sankirtan, that's the yagya, would have been sufficient. Krishna Balaram temple opened. But he said we would not be accepted by the local people, so we did all of this pujas and homas and yagyas and so on. So Prabhupada is explaining how he's doing things also in ISKCON. He mentions many times in his purports too. तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में बताते हैं कि हाँ, हम लोग जो ये हरि नाम किए यही सब पूरी तरह समर्थ है इस मंदिर के उद्घाटन के पूर्ण संपूर्णता के लिए, लेकिन जो कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे. उनको स्वीकार कराने के लिए हम लोग ये जितने बाहरी आडंबर है ये सब चीज़ें किए. Prabhupada's purports are amazing. I mean, there's so much amazing, unbelievable, unexpected knowledge that you get from those purports. तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने अद्भुत है कि उसमें आप बहुत सारे चमत्कारिक ज्ञान है जो आप उस तात्पर्य से पा पाएंगे. So yeah, Prabhupada took so much time to give us those explanations. So I think even if we don't think they're important, still to honor Srila Prabhupada's service to us, we should read. तो प्रभुपाद जी इतना जोर दिए हैं तो प्रभुपाद जी के सम्मान के लिए एटलीस्ट कम से कम हम उन तात्पर्यों को पढ़ें. Thank you. धन्यवाद. There was some more questions here by the. Hare Krishna Maharaj. Where are you? I can't see you. Oh, okay, there you are. Okay. Hare Krishna Maharaj, kindly accept my humble obeisances. Nice understanding today. Maharaj, when the entire knowledge available in Bhagavad Gita, Bhagavatam and the Chaitanya Charitamritham presented by Srila Prabhupada, then what is the need of writing and selecting and releasing so many books apart from the main knowledge? In fact, the Srila Prabhupada books are sufficient for the entire life when we repeat and repeat reading. So my question is, when we follow the important intersections, is it not sufficient for achieving the ultimate goal? And what is the motto behind the writing so many books apart from the Prabhupada's books? तो प्रश्न आया है कि श्रील प्रभुपाद जी के जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और ये सब चीज़ें ग्रंथों में सब चीज़ें हैं, और यदि उसका हम लोग पुनरावृत्ति बहुत बार बार करेंगे तो सभी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएंगी. तो अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पुस्तकें हैं, तो उन सबों को आने का या उनको पढ़ने का क्या ज़रूरत है? Well, you're right in that sense, but there is another aspect to that. हाँ, आप एक तरीके से सही हैं, लेकिन इसका एक दूसरा भाग भी है. Prabhupada said these 4 books are sufficient. तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये 4 पुस्तकें आपके लिए संपूर्ण है. He said you can't even finish Srimad Bhagavatam in one lifetime. तो प्रभुपाद जी ने बोला कि श्रीमद् भागवतम को आप अपने जीवन में भी कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे. But our Gaudiya Vaishnava tradition is that the Guru, he will produce books and the followers should write explanations on the books of the spiritual teachers also. तो हमारी ये गौड़िया परंपरा धारा में ये एक परंपरा है
कि जो गुरुदेव होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो पुस्तक लिखते हैं और उसके बाद जो उनके अनुगामी होते हैं वो लोग उनके एक्सप्लेनेशन लिखते हैं. Just like you see Rupa Goswami did Bhakti Rasamrita Sindhu. जैसे हम लोग देखते हैं रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक उन्होंने लिखा. And I think it was Jiva Goswami, he did a commentary on Bhakti Rasamrita Sindhu. और हम लोग देखते हैं कि जीव गोस्वामी जी उनके ऊपर भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर उन्होंने तात्पर्य टीका लिखा. So they call them tikas, which means basically commentaries on the acharya's work. टीका का मतलब ही होता है कि जो पहले के आचार्य जिन्होंने लिखा है उसके ऊपर हम एक तात्पर्य लिख रहे हैं जो हमें समझने के And लिए. Prabhupada instructed us to do that, to make this knowledge more easier and understandable for different types of mentalities. तो प्रभुपाद जी ने हम लोग को ऐसा आदेश दिया था कि हम लोग भी ऐसा करें ताकि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे तरह के मेंटलिटी के लोग हैं, वो भी इन चीज़ों को समझ पाएं. I had a personal experience where there was one boy. He had come to our temple in Soho Street in London. He was coming, but he was struggling with Srila Prabhupada's books. He couldn't understand them. He didn't have any when he tried to understand them, he pretty much gave up on them. He lost interest. तो हम देखते हैं मेरे जीवन में एक घटना के करीब आया कि जो सोहो टेम्पल लंदन में है वहाँ पे एक भक्त था. तो श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ता था लेकिन उसको उतना टेस्ट नहीं आया, तो कुछ समय पश्चात उसको छोड़ दिया. But then he read some commentaries given by Prabhupada's senior devotee on Prabhupada's books, and that really helped him a lot, and he came back and became active again as a devotee. He was about to give up because he couldn't understand Prabhupada's books, but after reading the commentaries, the explanations, he could understand. तो शुरुआत में उसको प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं समझ में आ रही थी, तो वो सोचा कि अरे बस छोड़ देता हूँ, अभी तो नहीं कर पाऊंगा. लेकिन कुछ समय पश्चात वही पुस्तकों के ऊपर श्रीला प्रभुपाद जी के वरिष्ठ जो शिष्य थे उन लोगों ने बहुत सारी टीका लिखी या एक्सप्लेनेशन दिया था जो उस भक्त ने पढ़ा, और पढ़ने के पश्चात उसको समझ में आया. तो ये उसके लिए बहुत ही लाभदायक था, मददकारी था. तो इस प्रकार से वो फिर से भक्ति को पकड़ा और श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों में उसे थोड़ी थोड़ी रुचि आने लगी. And Prabhupada wanted us. He told us. He said, "Write books on my books." तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनकी पुस्तकों के ऊपर हम लोग पुस्तक लिखें. And then he quoted a statement. He said, "All of the writings of the Goswamis were based on the 8 verses from Shikshastakam. These 8 verses that Lord Chaitanya spoke, he said all. He didn't say some. He said all of the books put out by the Goswamis, 6 Goswamis, were based on those 8 verses." तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हम लोग जितने भी जो गोस्वामियों की पुस्तक देखते हैं, यदि सभी को यदि एक जगह जोड़ के देखा जाए तो ये सारे पुस्तकें जो उनके द्वारा लिखी गई हैं ये आई हैं चैतन्य महाप्रभु की जो 8 शिक्षाएं हैं, शिष्टाष्टकम जिसको बोलते हैं, उसके आधार पे ही ये आई हैं. So you can unpack this knowledge unlimitedly. तो आप इस ज्ञान को और ज़्यादा खोलकर लोगों तक सर्वसुलभ कर सकते हैं. And then Prabhupada also said, try to understand this knowledge from different angles of vision. That means there's different ways you can understand the same verse. तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि बहुत अन्य तरीकों से भी इसको समझने का प्रयास करो ताकि इसको बहुत तरीकों से आप दूसरे लोगों को बता पाओगे. So Prabhupada wanted that we write about his books. तो प्रभुपाद चाहते थे कि हम उनकी पुस्तकों के ऊपर पुस्तक लिखें. Thank you. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Hi, glories to Prabhupada. Hare Krishna. And thank you so much, Maharaj, for inspiring us to read more and more Srila Prabhupada's books. Maharaj, recently I was having a discussion with a devotee who made a point and I didn't completely agree with him. So he said that like Srila Prabhupada's commentaries, his purports, are meant for the present time, addressing the present mentality of the people. But he said that in few 100 years to come, or let's say 1,000 years to come, it will be like the commentaries of the acharyas like Srila Baldev Vidyabhushan or Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, which will be read more than Srila Prabhupada's commentaries because they are on the absolute level. And Maharaj, it might seem like
intellectually convincing, but it doesn't feel good to the heart, because Srila Prabhupada has said that my books are the law books for the next 10,000 years to come. So how do we understand this, Maharaj? तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्साह देने के लिए हम लोग को, और आपके शिष्यों मेरा प्रणाम। तो हम लोग एक भक्त के साथ मेरा बात हो रहा था, तो बोल रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी की जो कमेंट्री है वो अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसके लिए ये बहुत उपयुक्त है। लेकिन फिर बात होते होते वो बोलने लगे कि हो सकता है कुछ समय पश्चात जब जैसे से टाइम पार होगा तो बलदेव विद्याभूषण और दूसरे से जो आचार्य हैं उनकी जो टीकाएं हैं उनको लोग ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, क्योंकि वो एब्सोल्यूट लेवल पे है। तो हम समझ नहीं पा रहे, थोड़ा इसके विषय में बताइए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की किताबें 10,000 वर्षों तक लॉ बुक के रूप में रहेंगी। Well, that's a very dogmatic vision of the books and the philosophy. तो ये बहुत एक बोल सकते हैं निम्न स्तर का एक सोच है। You remember something and then you think you know it. आप कुछ याद कर लिया और आप सोचते हैं हाँ मैं तो जान गया। The dynamic element of this transcendental knowledge is that it can be applied in according to time, place, and circumstance. It's not limited to a particular culture, a particular history, particular time and place, a particular mentality. It is universal. It applies across because this knowledge is pure devotional service. It's not within the three modes of material nature. तो ये जो हम लोग ज्ञान देख रहे हैं ये किसी चीज़ों के द्वारा आबद्ध या रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये भगवान का शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेममयी भक्ति है जिसको हम लोग कभी भी लगा सकते हैं। Well, for that person, maybe they can't see beyond a certain understanding, but those who study and understand, then they can see how this can apply eternally. लेकिन वो भक्त हो सकता है कि उसको छोटा सा ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है, तो उस चीज़ों को नहीं समझ सकता है विस्तार रूप में। लेकिन जो व्यक्ति जिनकी ज्ञान जो है बहुत ब्रॉड है वो इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे किसी भी समय में कहीं पे भी इसको हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। Krishna's pastimes are eternal. Krishna's pastimes are eternal. Krishna's pastimes are eternal. भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं नित्य हैं। And Prabhupada's books are full of the pastimes of Krishna and all of the manifestations of the Supreme Lord. So that knowledge, you can't say that knowledge is limited to a certain time and place. तो प्रभुपाद जी की जितनी पुस्तकें हैं उसमें जो भी तात्पर्य जो भी चीज़ लिखी है वो भगवान की दिव्य लीलाओं का ही वर्णन है, तो उसको हम लोग लिमिट नहीं कर सकते कि हाँ इसी टाइम में मतलब एक्सेस है या इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये अच्छी मतलब नित्य है। So that person has what we call very dogmatic understanding of the knowledge, and he thinks that it applies only to a certain time and place. Actually, we are still 55 years after Prabhupada, and we're still using Prabhupada's books. We're still applying the same knowledge. तो हम लोग देख सकते हैं उस भक्त का जो सोच है वो उतना ज़्यादा उन्नत नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं कि 50-55 साल हो गए लेकिन हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ही पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। And His Holiness Bhakti Charu Swami has very carefully studied Prabhupada's books, and he said that Prabhupada gave us everything. There's no need to go any other place for whatever you want to find. It's all there. You just have to know how to find it, that's all. तो श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज जी वो बता रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी हैं और बोले कि हमें कोई भी चीज़ की यदि ज़रूरत है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ठीक से खोजना चाहिए कि कहाँ पे है। And can we simply read and understand? It's not that easy. तो बहुत बार ऐसा है कि सिर्फ पढ़ लिए समझ जाए, ऐसा नहीं होता है। Okay, we have any more questions? Yes, Maharaj. It's right there. Okay. Like now at present in ISKCON. Little louder. Yes, at present in ISKCON to write a book, is there from GBC, is there any eligibility or any criteria, or anybody can write book? तो महाराज अब जी अभी श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तकों के ऊपर कोई पुस्तक लिखनी हो
तो जीबीसी के द्वारा क्या कोई दिशा निर्देश दिया गया है या कोई भी व्यक्ति पुस्तक लिख सकता है? And that's mentioned in the Chaitanya Charitamrita that no one should just write about transcendental topics simply by their own ideas or their own inspirations. If they have that inspiration and idea, they should get the blessings of their spiritual master and the assembly of devotees. तो चैतन्य चरितामृत में इसके विषय में बताया गया है कि ऐसा नहीं कि हमारे मन में आ रहा है, मेरे विचार में आ रहे हैं कि हाँ पुस्तक लिखे तो नहीं, चलो लिख देते हैं। नहीं, गुरुदेव जी का, गुरु का आदेश लेना होगा, उनसे आशीर्वाद लेना होगा, सारे वैष्णवों के आदेश लेना होगा, आशीर्वाद लेना होगा, उसके पश्चात हम लिख सकते हैं। So we seek the blessings of the advanced devotees, seek the permission of them also, and then go ahead and write. Then you'll be successful. तो हाँ, यदि आप उन्नत भक्तों का यदि आशीर्वाद लेंगे, उनकी अनुमति होगी और उनकी अनुमति के पश्चात यदि आप लिखेंगे तो हाँ, आप अपने इस कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। That comes when it comes to books, yeah. But articles, we write if we get inspiration for writing articles. तो ये सब चीज़ें किताब के पुस्तकों के विषय में बताई गई है, लेकिन यदि आप छोटी छोटी लेख लिखना चाहते हैं तो यदि आपके मन में विचार आ रहा है तो लिख सकते हैं, छोटी लेख के विषय में नहीं है ये। Yeah, Prabhupada mentions that in the Chaitanya Charitamrita when he describes the books of Jiva Goswami. He talks about no one can simply write books on transcendental knowledge. तो चैतन्य चरितामृत में जीव गोस्वामी जी के द्वारा ऐसा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति ये जो दिव्य पुस्तक है, दिव्य ज्ञान है, उसको नहीं लिख सकता। When Krishnadas Kaviraj Goswami was asked to write, he took the blessings of Madan Mohan. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जब चैतन्य चरितामृत लिखना चाह रहे थे, मतलब उनको जब आदेश किया गया था, तो सर्वप्रथम गए मदन मोहन जी से अनुमति और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। When Baladev Vidyabhushan had to write a commentary on the Vedanta Sutra for the Gaudiya Vaishnavas, he took blessings from Govinda ji first. तो बलदेव विद्याभूषण जी जब वेदांत सूत्र पे जब अपनी कमेंट्री लिखना चाह रहे थे तो गोविंद जी के पास गए थे आशीर्वाद लेने के लिए। So one should seek the blessings of the Lord and the blessings of the acharyas. तो हमें पूर्ववर्ती आचार्य और भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करनी चाहिए कुछ भी लिखने से पहले। Thank you. Okay, there's a question back there. Let's see. We're down to 3 minutes left for time. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Bol. Some devotees say that it is more important to read the first 9 cantos and Chaitanya Charitamrita first rather than reading the 10th, 11th and 12th canto purports, because the purports there were given by Prabhupada disciples. So it's more important to understand Prabhupada's The purport. 9 cantos of Bhagavatam, right? Yes, yes. Not Chaitanya Charitamrita. 9 cantos of Bhagavatam and then directly Krishna book and maybe Chaitanya Charitamrita instead of reading the 10th canto and the 11th canto. तो मेरा प्रश्न है महाराज जी कि बहुत सारे भक्त लोग बोलते हैं कि 9 जो श्रीमद् भागवतम के जो 9 स्कंद है उसको पहले अध्ययन करो, उसके बाद कृष्णा बुक और चैतन्य चरितामृत पढ़ो, क्योंकि 10वां स्कंद और 11वां ये सब तो उनके प्रभुपाद के शिष्य ले लिखे हैं। Well, Srila Prabhupada said 2 things in relationship to that. One, he said, it's best to systematically go through Bhagavatam verse by verse, starting with the beginning. And then as you come to the end of the 9th canto, then your consciousness is somewhat developed and you're pretty much prepared for the 10th canto. That's pretty much what Prabhupada. But then he said, my books are like sweet balls, you can bite them from any part. So he said, they're all sweet, you can taste them from any side. So there are people who can't follow the systematic way. That doesn't mean they shouldn't read. That doesn't, just because we can't do systematic, it doesn't mean we don't read. No, read somehow. But if you do systematic, you'll find it becomes more
understandable in the total context of the knowledge. तो श्रील प्रभुपाद जी इस संबंध में दो चीज़ें बोलते हैं। पहला है कि सिस्टमेटिक पढ़िए, एक एक जितने श्लोक हैं उसको पढ़िए, ऐसे करते हुए जाइए। और दूसरा बोलते हैं कि ये तो एक स्वीट बॉल या रसमलाई जो भी बोले उसकी तरह है, आप जहाँ से भी खाइए तो आपको आनंद आएगा। तो हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं कि यदि इसको सिस्टमेटिक ढंग से यदि आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। Personally, I think the devotees who are disciples of Srila Prabhupada, who finished the Bhagavatam, did a brilliant job. I think it's amazing. I think they were empowered to do that work. And there was a group, and that wasn't just one or two persons. There was a few that worked together in a very systematic way to study Srila Prabhupada's books, to study the Acharya's commentaries on those verses in the 11th and 12th canto, and then try to understand how to put the explanations together. I think they did a wonderful job. I mean, that's my opinion. तो जो श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग जिन्होंने ये जो सेवा की हैं तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सेवा किया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिख दिया, उन्होंने आचार्य के जो टीका है, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें अन्य अन्य जगहों पे, ये सब चीज़ों को गहन अध्ययन किया है, समझा है, और उसके पश्चात 11वें स्कंद और 12वें स्कंद का जो तात्पर्य है ये सब चीज़ें दिया है। तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। If they're not inclined to read that, that's fine for them, but I am. तो यदि वो नहीं पढ़ना चाहते तो अब उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं तो पढ़ता हूँ। I like the whole Bhagavatam, not just up to a certain point. तो मैं पूरे भागवतम को पसंद करता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ 9 और 10 तक ही मतलब पसंद करता हूँ। If you want to know about the age of Kali, hey, 12th canto. तो यदि आप कलयुग के विषय में जानना चाहते हैं तो 12वां स्कंद तो पढ़ना ही पड़ेगा। Then you know why things are happening the way they're happening in the world. तब आप जान पाएंगे कि कलयुग में इस जो संसार में जो चीजें घट रही है वो क्यों घट रही है, कैसे घट रही हैं। Yeah, 12th canto is really deep in knowledge about current events. तो हम लोग 12वें स्कंद में बहुत गंभीर है, गहन अध्ययन में हम लोग जान सकते हैं इस विषय में कि कलयुग में ये चीजें घटनाएं कैसे हो रही हैं। And I remember one lecture Prabhupada gave. He stopped the lecture. He was giving a lecture on the 4th canto, and he pulled out a manuscript. The manuscript was the 12th canto, which hadn't even he was still doing the early cantos, and he just read. He was reading all of the symptoms of the age of Kali. And Prabhupada was really, as he was going through the symptoms, he was explaining each one of them in detail. And I found it really interesting, and that really inspired me to, read the 12th canto when it came out. तो एक बार की घटना है, श्रील प्रभुपाद जी चतुर्थ स्कंद पे कुछ बोल रहे थे और बोलते बोलते अचानक रुक गए और 12वें स्कंद का उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट निकाला और उसमें वो कलयुग की जो वर्णन है उसके विषय में पढ़ने लगे और प्रत्येक चीज़ों को समझाने लगे पूरे एक विस्तार रूप में। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे एक उत्साह भी लगा और मैं इसलिए उस चीज़ों को और बार में पढ़ा। So I made a little poem. I'll end with my poem. So it's a rhyme. Read the creed. That's the need. Get up to speed, take the lead, and you'll be happy indeed. हरे कृष्णा। तो ये कविता आपने जो सुना उसको आप अपने जीवन में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Thank you, Maharaj. जय हरे कृष्णा। So please read. तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कृपया कर पुस्तकें पढ़िए तात्पर्य के साथ। Hare Krishna. So we thank Maharaj for wonderful lecture on importance of Srila Prabhupada books and reading the purpose. So we'll thank Maharaj by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So with this, तो इसके साथ हम लोग श्रवण उत्सव का चौथा दिन का पहला दफ़ा कंप्लीट कर चुके हैं. तो सेकेंड पोर्शन ऑफ फोर्थ डे विल स्टार्ट एट 4 o'clock. 4 बजे से स्टार्ट होगा भजन कीर्तन और 4:30 बजे से लेक्चर शुरू होंगे. तो आज के जो सेकेंड दफ़ा के लेक्चर्स हैं, देर आर लेक्चर्स लाइक हिज ग्रेस हरिशौरी प्रभु, हिज ग्रेस भक्ति सिद्धांत प्रभु, हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज, and His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj. So right now prasadam will be distributed. So please come in the queue and get the coupons for the prasadam. Thank you very much. Hare Krishna.